this is not a good sign. So whatever the distance education, it's a defeated, because more number of students will join. It's very interesting. So anyway, so, and I request to all of you, kindly write your enrollment number and name in your chat box. Okay. So with these words, I am not taking much times, because today is a long and marathon session. So I request to Mohanty sir take over the session and continue his deliberation. Mohanty sir. Okay, thank you, sir. Dear friends, good morning. As you know, yesterday somehow we encountered a technical problem. I would like to start afresh again. I do not know from where exactly we left or the technical problem cropped up yesterday. So at least from the very beginning, I will give an bird's eye view, and later on, I would like to capture more in a more analytical mode. So from the very beginning, I'm just giving an bird's eye view on the left out one. And just a small, actually, from my side, actually, sir has rightly pointed out that students are not coming forward to have classes, online classes. And I had actually discussed things with Paningrai sir, that whether my teaching is generating interest amongst you or not, because honestly, I'm also trying my level best to consult various notes and textbooks and all the other sources of information, and trying to put forth things as wisely as possible from my side. It would be better if some of your other friends will join and also give their feedback, because I am also new to this online learning, teaching learning method. I am also devoting much of my time in giving proper learning to myself before imparting the session to you. So I would again request, as Sir has already requested you, to kindly share things to your friends, and I would be happy to see your reviews and your feedback on my teaching as well, because I am not the master of everything. I have to consult many books and journals and other online sources, my friends, before preparing the slides. So I may, at times, I might go wrong, or at times I might not be might not be going up to your expectation in some level. So please let us know regarding your expectations. Maybe possibly I would like to I would like to develop it further. Thanks. Friends, yesterday we were actually studying survey method. So as we had been discussing yesterday, that survey normally is undertaken to garner, to gather opinions, attitude, and social facts. And the researcher primarily interested in assessing the characteristics of the whole population. It's a bigger chunk of universe. Our universe is bigger than the other academic research, like your descriptive or other analytical research. And there were many types of survey research: personal interview, questionnaire and survey, telephone survey, panel technique. These are some of the typologies of surveys being conducted in modern era. And in survey, what is a personal interview? Yesterday we were having discussion on personal interview. Possibly you might have we might have covered it up, but let us discuss it again, because of because it would actually revise your memory. Any kind of interview, there is an interviewer and interviewee. A person who undertakes research
and study, who conducts research and study, and there is an interviewee or respondent to whom we are directing our questions. So for the ideal success of any interview, three primary factors are responsible for the success of interview. And the first is accessibility, second is cognition, and third is motivation. Regarding accessibility, yesterday we were discussing how to generate interest, how to be familiar with our respondent, how will create rapport building process katha kohuche ame, how far I will make myself closer to my respondent so that there would not be any mental barrier in between us, so that the respondent would feel free to express things before me. And the environment, it is the onus, it is the responsibility of the researcher himself to make the interview situation such that the environment and the ambience makes the respondent feel at home, and he or she will respond the questions or respond the interviewer or the researcher in a free and very expressive way. There would not be any mental block. He or she will feel comfortable in answering your questions. So it is the onus of the respondent, onus of the researcher or the person who is surveying things or asking questions or making personal interview to make it feel comfortable for the interviewee to express things in a free and fair manner. And second thing is cognition. The respondent is able to understand what is required of him. There must be a kind of communication, or the way the researcher put things before the respondent, that out of his body language or from the cognitive indication of the researcher, the respondent could understand things. So it is nothing but making oneself easy before a particular situation or a person. I am making myself available, or making myself available to the extent that the other person is at ease to understand my kind of things. Mu kon पचारिबाकु जाउची मु कोन चाहूची एक्जाक्टली द सिचुएशन कोन मु एभळिया गोटे परिवेश सृष्टि करि पारुची out of my body language also. The other person, the respondent, could gather what I want to express or what I want to study, what I want to ask from him. So that is equally the responsibility of the researcher or the person who is undertaking the survey. And third, the motivation of the respondent to answer accurately. So it is a very difficult and delicate things, because we are not dealing with matter, or for that matter physical matter, chemical matter. We are dealing with human individuals. So what would be the kind of interaction and the kind of motivational aspect from the researcher that the other person or the interviewee will feel comfortable in answering the truth or answering what he or she wants to answer. So it is again very delicate and important issue, that how the
surveyor or the interviewer generates interest in the respondent, so that he or she is motivated enough to answer you accurately, honestly, and very interestingly. So the onus lies on the interviewer or the person concerned who is actively engaged in interviewing things, that he will make the environment or his very presence and his accessibility to the person, or the kind of rapport he builds around the situation, that the person feels comfortable in responding to his questions. So, as you know, there is two types of interview, or I mean, जो interview schedule कथा मध्य कौचे, structured and unstructured. In some of the research methodology book, we will also find structured, semi-structured, and unstructured. Here we are dealing with structured and unstructured interview for the sake of understanding, because there is literally very little difference between structured and semi-structured kind of interview. So we are dealing with structured and unstructured interview only in this slide. When we are talking about, as you all know, formal and informal, structured and unstructured kind of things, structured is something that we are following a particular pattern, the researcher is following a particular discipline, following a set pattern. He has prepared a list of questions beforehand. He has applied some of the close-ended questions and answers. What I want to say is that when we are talking about a structured interview, the interviewer, the person, the researcher, the survey person has gone to the field with a particular set of framed ideas, structured process with him or her, having a list of questions beforehand. आमे काली मध्य कथावार्ता होतले मैं जानिनी आमे कटि जाइतले कि नाही, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. आमे जदि कहबे जे तमे सकाळे उठले कोन पीबा को भलो पाओ, यू आर फ्री. बट मु जदि कहबी सकाळे उठले आपण चा पियंती कि कॉफी पियंती, दैट इज क्लोज एंडेड. I have not given you enough space and opportunity to operate. I have given you a limited choice whether you like tea or coffee. You need to answer, in your answer should restrict within tea or coffee. So when a survey person goes or a researcher goes with a close-ended questions, there beforehand, during the preparation of research design, he or she, as per the requirement of the study, has framed questions, framed close-ended questions, because of the requirement of the study. He or she purports, सी जहाँ चिंता करिछि, जहाँ से विजुअलाइज करिछि, से दृष्टिरु से क्लोज एंडेड प्रश्न करिछि, एवं पॉसिबली ही और सी हैज thought that this answer would be sufficient enough to answer to enrich his study. That study को बोधुए एतिकिरे enrich हेइ पारिबो. He or she has thought in that particular way. And when we are talking about unstructured kind of things, there is no sequence of answering of the questions I will ask. There is no set pattern. Mu ko hisabare pacharibi. There is no patterning at all. There is no interview schedule having list of questions beforehand. And the questions jaha mu pacharuchi, that is open-ended. Many of the social scientists and sociologists have their own reservation, have their own predicament, or they have got their own criticism of both the kind of interview. And to you, students who have not earlier dealt with unstructured kind of interview, might feel that this kind of interview might not
yield any result, कौन सी प्रकार निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत होवा पई हुए तो ए जो unstructured kind of interview process would not lead to a study to anywhere. But let me clarify you friends, when you are dealing with, it has got its own limitation, that is true, but you must know that being social scientist, being student of sociology or anthropology, we are social engineers. We are dealing with human beings. We are dealing with, I was also yesterday, I was also talking about the same thing. We are dealing with abstract terms, abstract things. We are not dealing with matter, physics, chemistry, biology. We are dealing with human beings, human relationship, custom, tradition, social norm, behavior, relationship. So if you will analyze all these things, you will find all these things are abstract terms. Because even if we are living in a family, you can show me your home, but you cannot show me your family. You can show me your son, your wife. You will very well say that comprising all of them constitute my family. So again, family is a mental construct. Like religion, custom, tradition, mores, etiquette, manners. I जहाँ देखुचे सब जिन abstract in nature. So you will, at times, you will feel that to deal with abstract nature of things around us in the social realm, the unstructured kind of interview process has got its own merit. When you are asking a very structured kind of question, even if you are making the whole interview environment very friendly and very, you have got good rapport, still somebody knows that the other person is asking me a question. Here you are making more friendly effort. In unstructured kind of interview, you are making yourself available to the other person, not as an interviewee, but as a friend. You are not going to ask questions immediately. You are making yourself comfortable and the other person is, the whole environment is at ease. When you are writing, when you are making notes of everything before a respondent, at times also gives a bad picture. It's a bad kind of thing that the person to whom we are interviewing at times he takes an impression that what the other person will do out of this writing. वर्तमान रिसर्च मेथोडोलॉजी रे एते एनरिचमेंट आसिलानी एवं रेस्पोंडेंट्स जो मन को हमें अध्ययन करूचे जो माने हमर ये एवं मोस्टली जो मन को हम इंटरव्यू करूचे अनेक समय रे वर्तमान देखा होची गोटे हायर पेडेस्टल ऑफ एथिकल गोटे स्टैंडर्ड मेंटेन करा गलानी 30 वर्ष तळे एगुडी कोन छला हम माने जते बेले मास्टर्स डिग्री करूतलु फील्ड वर्क करूतलु मासे पाई गोटे निर्दिष्ट रूरल सेटिंग रे ट्राइबल सेटिंग रे जाई रही कि तांकर विभिन्न ट्राइबल एवं रूरल सोसाइटी विभिन्न दिग प्रति अध्ययन करबा पई हमकु ट्रेनिंग दिया जाउतला सेते बेले ए प्रकार रे जिंस नथला एबे जेतिकी जोर रे एथिकल स्टैंडर्ड सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस रो ए जो इंटरव्यू डाटा कलेक्शन रे होची गोटे नुआ कथा होची जे बिफोर आई एम गोइंग टू आस्क एनीथिंग बिफोर इंटरव्यूइंग सम ए पर्सन आमे अनेक समय रे लिखित भाव रे मध्ये निया होची जे मे आई टेक योर इंटरव्यू आर यू गिविंग योर परमिशन टू बी इंटरव्यूड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टडी आगो कोन होतला लोक जाउथले गां रे बुलाबुली करी प्रश्न पचारि आस्तले एवं से माने तांकर रिसर्च को नेगरी मोस्टली कंसर्न थिले मु यूनिवर्सिटी रे मार्क पाइबी मु आकु नेगरी थीसिस लेखिबी इट इज the whole purpose was to benefit the researcher. Subsequently, it has been seen that it is unethical.
जो लोक को पचारली से लोक पाखु के फेरिबार नाही, से कम्युनिटी को फेरिबार नाही। तेकर परवर्ती समय देखा गला जे हायर पेडेस्टल ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करिया को रिसर्चर मस्ट प्रिसाइजली प्रेजेंट द इश्यूज ही और सी इज डीलिंग। से कौन पई ये अध्ययन करूची, कौन करबा को चाहूची। मो गाँ को आसिक 10 जन को संगे जतबे कथबार्ता करूची, हाँ सेतबेले मते ताको पचारिया पड़ुची जे मु आज्ञा या ऊपर किसी अध्ययन करिया को जाउची, से अध्ययन रो आवश्यकता अनुसार मु आपनको किसी प्रश्न पचारिया को चाहूची। And these are some of the questions that I need to ask to you. Can you kindly give me your consent? यदि आपण मते किसी आपणकर अनुमति प्रदान करिवे ताहले मु आपनको इंटरव्यू करिवे। So see the kind of honesty, the kind of integrity, the kind of scientificness being promoted, being used in social science research। जेतेबेले आमे गोटे निर्दिष्ट रेस्पोंडेंट को इंटरव्यू कला पूर्वरु ताठू आमे लिखित भावरे, आमे ताठू व्यक्तिगत स्तर रे आमे ताठू परमिशन आडुचे कि अनुमति नौचे जे आपणको मु ए अध्ययन सकाशे आपणकर मतामत नवा को चाहूची। आपण कोनोसी प्रकार रो प्रलोभन, कोनोसी प्रकार रो प्रेशर रो बसवर्ती न होई आपण मते आपणकर इंडिपेंडेंट मतामत देबा पय अनुमति देबे की। So see the kind of change that has taken place in the social science research and the kind of objectivity, the kind of honesty is being maintained। ए प्रकार स्तर को मध्य आमे आसिले, तेणुक से प्रकार गोटे व्यवस्था भितर आमे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसेस एट टाइम्स हेल्प्स ए लॉट। आमे कोन सी स्ट्रक्चरली जाइने बट ओपन एंडेड क्वेश्चन छाड़ी छै ताको तथापि वी आर गेटिंग good result out of our interview। So it is nothing, friends, you yourself also must have encountered this kind of questions in your life when at times your formal acquaintances with somebody might not have resulted so much of interest of the other person in you rather than your informal relationship with somebody else। बेले बेले आमे इनफॉर्मल और फॉर्मल को आपण ओडिया रे बुझी पारथुए बुझे जे आमे कहूचे जे आमे गोटे फॉर्मल प्रोसेस भीतर जाई करी जेति कि बेले बेले न अर्जन करी पारुचे ताकि इनफॉर्मल प्रोसेस यील्ड्स गुड रिजल्ट। काली मु बोधे एटा एपर्यंत जाइथिले कि नै जानि नै जे क्वेश्चनियर जिंस कहा जाए जे बहुत गोटे सिंपल वर्साटाइल एंड लो कॉस्ट सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड। जेहेतु आमे गोटे प्री डिटरमाइन सेट ऑफ क्वेश्चंस नै कि जाउछु हाईली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू करियो को सेइथरे क्वेश्चनियर गोटे बहुत हेल्पफुल हेइथाय एवं क्वेश्चनियर एथि पई मध्ये हेल्पफुल हेते कहा जाए जे मु जेमति पूर्व स्लाइड रे कहली जे क्वेश्चनियर हेल्प्स मोर टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्टनेस अराउंड अस, अराउंड द सोसाइटी। द एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स ऑफ सोसाइटी इज बेटर कैप्चर्ड थ्रू क्वेश्चनियर मेथड। व्हाट इज दैट? लव, फेलो फीलिंग, appreciation, cooperation, care, attitude, knowledge, belief, religion। तो ए गुडा को ऊपर जो गुडा abstract in nature questionnaire method possibly help करे to gain more out of these kind of abstract things around our society or in our society। एवं apart from that also the demographic part काली मध्य कहि जे what is demography? Demography is nothing but the study of human population। The study of population helps us to understand various intricacies, विभिन्न प्रकार रो सामाजिक व्यवस्था एवं विभिन्न प्रकार रो
रिलेटेड सामाजिक अवस्था को सूचेवा पई समाज रो विभिन्न प्रकार रो सांप्रतिक सामाजिक व्यवस्था को बुझिबा को हेले से समाज रो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मध्य बुझिबा आवश्यक किंबा से समाज रो जनसंख्या संबलित विभिन्न तथ्य को मध्य बुझिबा दरकार एवं क्वेश्चनियर मेथड गोटे मेथड जोटा कि अपार्ट फ्रॉम दी एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ सोसाइटी को बुझिबा एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ सोसाइटी एंड वेरियस सोशल फैक्ट ये मध्य जनसंख्या सम्मिलित विभिन्न तथ्य गुड़ाक बुझिबा पई ता उपरे तथ्य संग्रह करिया पई एवं निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत होआ पई हमको बेसी हेल्प कर आपण माने जानि छथि डेमोग्राफी ऊपर विशेष कहिबार आवश्यकता नाही कारण डेमोग्राफी इज ए कंप्लीटली ए डिफरेंट सेट ऑफ नॉलेज ए डिफरेंट डोमेन ऑफ नॉलेज कारण डेमोग्राफी इटसेल्फ गोटे विज्ञान बोली कि कहा जाए द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बर्तमान आम जो सेंसस देखुचे आप जानते सेंसस ऑपरेशन इज ए ह्यूज अफेयर वेयर द गवर्नमेंट अंडरटेक्स सेंसस इन एवरी 10 इयर्स डिकाइडल ह्यूमन पॉपुलेशन रो ग्रोथ मेल फीमेल रेशियो आपनकर लिटरेसी लेवल एवरीथिंग इवन आपनकर शिशु मृत्यु हार ए सब गुड़ाई जिनस देखा जाए जोटा कि जहाँ द्वारा आम सोसाइटी रे प्लानिंग प्रोसेस रे सोसाइटी रे आम विभिन्न प्रकार वर्गर लोकों पुणी नीति निर्धारण करने क्षेत्र में पॉलिसी डिसीजन नवा क्षेत्र में स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स डिवाइस करने क्षेत्र में डेमोग्राफिक डाटा डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन plays a very vital role. Unless and until you will have proper demographic information before you, a planning process will never be fruitful in a country like India, that too in a huge and varied and a multifarious population. But India रे गोटे diversity बहुत जोटी caste creed religion को नहीं करी विभिन्न racial लोग जोटी रहउचंती से प्रकार जगह रे demographic feature helps us to understand Indian society in a more realistic manner and to articulate things केमिति आमे विभिन्न आपनकर प्लान प्रोग्राम माध्यम रे विभिन्न जो प्रकार सेगमेंट रो पॉपुलेशन रो छंती जो मान को आमे डेमोग्राफिक स्टडी माध्यम रे आनिचे ताकू मध्ये केमिति सठिक भाव रे आमे टार्गेट करि परिबा तांका उन्नति पे काम करि परिबा डेमोग्राफी आल्सो हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एवं को प्रकार रो क्वेश्चन पचरा जाय जदी हमें देखिबा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड नॉर्मली इन ए सर्वे एंड सर्वे रे जो क्वेश्चनर रे कोन थाए ताले देखिबा मु जेमति आरो ये रे कहउतली जे जेतोळा हमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन कथा कहउचु सेतोळा हमें रेस्पोंडेंट आगे रे विशेष चॉइस दउनु एवं जेतोळे ओपन एंडेड कथा कहउचु सेतोळे रेस्पोंडेंट आगे रे बेसी चॉइस हमें दउचु किबा ओपननेस अछि ही और सी इज फील फ्री टू गिव हर और हिज ओन व्यू पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर इशू विदाउट restricting himself or herself to a particular set of answers. अगर मैं आगु को जाऊनी एटा होची एग्जांपल तापरे हमें पैनल टेक्निक कथा मध्ये मु काली कहउतली पैनल टेक्निक होची जे गोटे निर्दिष्ट सैंपल उपरे हमें गोटे निर्दिष्ट समय व्यवधान भितरे आम इंटरव्यू करवा एवं समय व्यवधान भितरे हेतुआ परिवर्तन को आम केमति देखि परबा काली एग्जांपल दउतली जे गोटे निर्दिष्ट जगह रे गोटे निर्दिष्ट डेवलपमेंट नुआ डेवलपमेंट हवा को जाउची किबा हेइची सेही प्रकार इंटरवेंशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेला पूर्वरु आमे गोटे निर्दिष्ट पॉपुलेशन संगे आलोचना करिचे ताकू इंटरव्यू करिचे तार मतामत नैचे एवं सेही इंटरवेंशन टी गवर्नमेंट रो हे गेला परे 2 वर्ष परे 3 वर्ष परे पुनी सेम पॉपुलेशन पाकू जाउचे एवं ताकू तांकर मतामत को संग्रह करिया चेष्टा करूचे सही प्रकार मतामत संग्रह प्रक्रिया जोटी गोटे निर्दिष्ट पॉपुलेशन गोटे निर्दिष्ट यूनिवर्स गोटे निर्दिष्ट एरिया रे आमे दुई थर सक्सेसिव इंटरव्यू करूचे सही प्रकार इंटरव्यू को आमे पैनल टेक्निक बोली कहूचे तापरे सर्वे रिसर्च रे से कहउचंती जे तीनोटी गुरुत्वपूर्ण फैक्टर्स काम करूची जे हमें डायरेक्ट कांटेक्ट टू दिस सैंपल आसचू अनेक समय रे डायरेक्ट कांटेक्ट हे पारेनी जेतोले सर्वे मेथड कथा हमें कहूचू इच एन इंडिविजुअल इच फैमिली मेंबर्स को भेटिया पे सुजोग मिलुची आजिकली जे प्रकार सर्वे सब होउची एवं सर्वे
सक्सेस डिपेंड करुची द विलिंगनेस एंड कोऑपरेटिवनेस ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड फॉर द स्टडी कारण आम जदि खाली गोटे एग्जांपल हिसाब से आम 10 वर्ष को थरे जदि सेंसस बीइंग सर्वे मेथड हिसाब से आम जदि देखियो कि सेंसस रो हमर कार्यकारिता ऑपरेशन प्रोसेस को आपण माने जानि चंदी इट्स ए ह्यूज प्रोसेस बहुत बड़ ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत बेसी भाव रे फाइनेंशियल रिसोर्सेस यूज हुए एवं आम से देखीचे जे वी ऑल टेक इंटरेस्ट इन दैट घर को से जो टीचर मैंने आसती कि जो वॉलंटियर मैंने आसती केते लेंथी वे आमको सब इंटरव्यू करते पचारती आम ता विषय कथबार्ता करूँ सो द विलिंगनेस एंड कोऑपरेटिवनेस ऑफ द सैंपल सिलेक्टेड फॉर द स्टडी इफ दिस वुड नॉट have ensured यदि एटा को एंश्योर न करा जीवो द होल पर्पस ऑफ द सर्वे और ऑफ सेंसस वुड बी डिफीटेड तो दैट गोटे बड़ जिनस जे आम खामखियाली हिसाब रे आमर यूनिवर्स को आमर रेस्पोंडेंट मान को नहीं परिबा नै बिकॉज each of the respondents view weights importance यार बहुत ओजन अछि to formulate a policy देखो सर्वे सब डिपेंड करुच्ची जे आम डायरेक्ट कांटेक्ट केमते आसुचे जो मान संगे कांटेक्ट आसुचे केते भलो भाव रे तांको भितर आम जनरेट इंटरेस्ट जनरेट करूचे एवं तांकर विलिंगनेस एंड कोऑपरेटिवनेस आम पाउचे जदि विलिंगनेस नाही कोऑपरेटिव कोऑपरेट हो नांती से माने देन द होल पर्पस विल बी डिफीटेड एवं से जगह देखा रिसर्चर जो माने रिसर्चर हूँ कि सर्वेयर हूँ दे मस्ट बी ट्रेन्ड पर्सनल गोटे सोशल इंटेलिजेंस थी मैनिपुलेटिव स्किल थी रिसर्च इनसाइट थी सपोज आम आमको जदि गोटे सोशल रिसर्चर हिसाब से देखा सर्वेयर हिसाब से आम आमको निजुक देखा आपण मैंने जो मास्टर्स डिग्री करुँच बर्तमान एंड मास्टर्स डिग्री भितर जिते आप वर्ष ऑनलाइन कोर्स रे प्रथम करी आम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़िया चेष्टा करुचे इनडायरेक्टली यह सत्य जे आपण माने याकु लेखिक गोटे मार्क पाइबे एमए पास हेबे से गोटे विषय वस्तु आर जिनसटा होची यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ इग्नू इज प्रिपेयरिंग योरसेल्फ टू बी गुड रिसर्चर अपन रिसर्चर होवा पे जो प्रकार रो ट्रेनिंग दरकार आमे रिसर्च मेथोडोलॉजी माध्यम रे चेष्टा करूछु जे हमर मास्टर्स डिग्री पिला माने रिसर्च methodology को नहीं करी सेति थरो हुअंतु that means it is before moving to the actual field situation you are also getting training out of this so सी कोन करूची एथरे कोन आपन मानकर प्राय हबो किंबा गोटे सर्वे जेतोल कंडक्ट होची हम देखुचे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो जो ऑल इंडिया लेवल हो ए प्रकार ए जो सर्वे सेंसस हो किंबा सेंसस को बाद दे अन्य अन्य प्रकार जेते प्रकार सर्वे टाइम टू टाइम कंडक्ट कराउची एबी रिसेंटली आपन माने जानिथिबे कोविड-19 भितरे मध्य घर को आसिक किसी दीदी मैंने सर्वे कर घरे किए कड़े बाहर को जाइला कि ए भितर घर को फेरी कि डिटेल्स ऑफ ये तो जेकोसी छोट सर्वे रु गोटे बड़ रिसर्च पर्यंत द रिसर्चर मस्ट बी ट्रेन्ड पर्सनल विदाउट ए ट्रेन्ड रिसर्चर रिसर्च वुड नॉट बी फ्रूटफुल तो प्रथम जिनस होची गोटे सोशल इंटेलिजेंस दरकार व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल सर्वे और सोशल रिसर्च आपण माने सेथरे डिफरेंशिएट करि परिबा दरकार जे बीइंग ए वेरी गुड साइंटिस्ट गोटे भलो नेचुरल साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट गोटे भलो आपनकर बोटानिस्ट ही मे नॉट बी हैविंग गुड सोशल इंटेलिजेंस सो प्रथम जिनस होची जतबेले आमे सर्वे कंडक्ट करूची सोशल साइंटिस्ट हिसाब रे आमे निजे को प्रेजेंट करूची एवं सोसाइटी विभिन्न दिग को आलोचना पर्यालोचना एवं गभीर भाव में गवेषणा करने चेष्टा करुचे से मूल जिनस होची जे टू व्हाट एक्सटेंट वी आर सोशली इंटेलिजेंट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज अराउंड अस देयर वी मस्ट हैव ए मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी इट्स वेरियस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स यदि सोसाइटी रो सोशल सिस्टम सोशल फंक्शन सोशल स्ट्रक्चर एगुड़ा आम बुझीने ताले रिसर्चर हिसाब रे मोर माय वेंचर इनटू द फील्ड रियलिटी वुड बी ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन आमे एई गुडा को ऊपर बेसी आलोचना इति करने जो माने बीए आपण माने सोशियोलॉजी रे पढिथिबे सोशियोलॉजी रो ऑलरेडी छात्र छात्री एवं सोशियोलॉजी पढिचंती किबा एई वर्ष पुनी प्रथम इंट्रोडक्टरी चैप्टर आपण माने पढिबे सो आपण माने समस्त जानिथिबे जे व्हाट इज ए सोशल सिस्टम व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज सोशल फंक्शन ई तीनटा जिंस बेसिक जिंस सोशल सिस्टम सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन यदि सोशली आम ए सब जिन गुड़ाक गभीर भाव में जाने
social structure कौन function कौन एवं society रो how society moves on. Society is nothing but a social system having its structural elements and performing different social functions. तेणुकरी याकू नहीं करी आमे मिनिमम गोटे रिसर्चर आइडिया नथिबो ताले सर्वे हो कि जेकोसी रिसर्च रे he will not be able to give his 100%. Then काली मु कहतली मैनिपुलेटिव स्किल जे सर्वे करूची डाटा आणुची डाटा को नेकरी मैनिपुलेशन मु काली मध्ये कहतली डोंट टेक इट अदरवाइज दैट मैनिपुलेशन इज डाटा को मैनिपुलेट करबा इन दी but the thing is that how to treat the data well. आमे आजी जेतले क्वालिटेटिव रिसर्च हमर से आजी रो एक्चुअली पेपर थिला क्वालिटेटिव रिसर्च आमे क्वालिटेटिव रिसर्च रे ए जो मैनिपुलेटिव स्किल एटी अछि आपन को किछ कंफ्यूज काले करिवो सो मैनिपुलेटिव स्किल अदरवाइज कोन मु सेठी क्वालिटेटिव रिसर्च जेतबेले आमे पढिबा एटा सारला परे मु सेठी आपन को सविशेष ता उपरे धारणा देबी जे मैनिपुलेटिव स्किल ता केते यूजफुल केते फंक्शनल फॉर सोशल साइंस रिसर्च तापरे रिसर्च इनसाइट ए ऊपर दीटा को छाड़ी देला परे रिसर्च इनसाइट जोटा आपण माने एबे पाउचंती हम माने ट्रेनिंग रे पाइबा किबा गोटे सर्वे जेतोळे लोकटी करछि से जाय करी रिसर्च रो इनसाइट तार केते अछि से भितरे से ग्रहण करछि एथरे एडवांटेजेस ऑफ सर्वे रिसर्च रो एडवांटेजेस कोन जे एठी गोटे वाइडर स्कोप great deal of information can be obtained. तो पुन थर कहि रखुची आमे एठी जहा पढुची यार गोटे रिलेशन अछि क्वालिटेटिव रिसर्च आज ही पढिबा आमे जे आमे को गोटे सर्वे तर करछि वाइड स्कोप अछि आमे बड़ गोटे पॉपुलेशन संगे डील करछि हम गोटे आवर सैंपल साइज इज बिगर देन द नॉर्मल रिसर्च सो इट जनरेट्स a great deal of information and data बहुत जोर रे बहुत डाटा हम पाखरा आछि सो डाटा को लेकर कौन करबा क्वालिटेटिव रिसर्च से डाटा केते हेल्पफुल हमें पूरी क्वालिटी एस्पेक्ट रे पढिबा एवं सर्वे रे सब इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू गोटे थाए आपण माने बुझन व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू मु आपण को आगो बुझाय जे आपण इंटरडिसिप्लिनरी वैल्यू बुझिबा को ले गोटे साइंस मन करन आपण यू आर डीलिंग विथ ए केमिस्ट्री और केमिकल साइंस को हम डील करू छी आमे सेठी ओनली केमिस्ट्री को डील करू छी किंतु आमे जेतले सोशल सर्वे करू छी गोटे सर्वे आरंभ होई छी आपण जानि छी गोटे सर्वे रे आरंभ रु ता जाति ठु आरंभ करी ता बापा मां ठु आरंभ करी ता लोकालिटी को आरंभ करी तार फैमिली लोक केते अछंती आरंभ होई करी से जो इशू ऊपर काम होची जो इशू ऊपर प्रश्न पचरा जाउची प्रॉब्लम एरिया कोन जहा ऊपर सर्वे करियो चिंता है कि ता ऊपर मध्ये 40 टा क्वेश्चन अछि दैट मींस the interviewer or the survey or the questionnaire itself is loaded with varieties of question which are interdisciplinary in nature. से आपनकर फैमिली रो अर्थनीति मध्ये पचारछि आपन फैमिली रो डेमोग्राफी सते पचारछि आपनकर घरे केते लोक रहंती तांकर बयस केते सेमान को भितरे को माने कोन अर्निंग करंती कोन जॉब करंती आपन मानकर कास्ट कोन So starting from demography, economics, sociology, anthropology, even psychology. पर से psychology के जीव कारण से जो question करियो question might be related to psychology also. So it is always interdisciplinary in nature. जेमति मु कहली जे it has a quality सर्वे रिसर्च में बड़ क्वालिटी है ये एटीट्यूड बिलीफ मोरल वैल्यू आपको कैप्चर कर परियो द क्वेश्चंस आर बीइंग पुट इन सच ए ऑर्डर सच ए फैशन दैट विदिन ए सर्वे द सर्वेयर कैन असेस व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर सोशल इशू व्हाट इज योर बिलीफ सिस्टम व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम व्हाट इज योर मोरल स्टैंडर्ड सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी assessed आपण माने एगुडा को सब रो डेफिनेशन स्वतंत्र भाव बिलीफ कोन वैल्यूज काहा को कहा जाय इंडिविजुअल एंड मोरल सोशल वैल्यूज कोन सेगुडा को सब इंट्रोडक्टरी ये पढिबे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली दोज पार्ट्स
will generate much interest in you rather than this research methodology. I can understand that it is not generating much interest in you. But those things, suppose I will talk, we'll have a small discussion. We all know what is value system. After this, after completing this slide, we'll have a discussion that if you know what is value system, can you differentiate between individual value and social value? What is individual value and what is social value? अपना value को ठीक है दाम ठू दूरे दबा मेंटल ये को नबा value अपन value रो ओडिया जो माने जानि थिबे आलोचना करि परिबा सेतबेले जे value रो ओडिया कोन ना मूल्य बोध ताले मोर प्रश्न होची आपण माने जो माने बीए रे पढि थिबे ताले आउरी बेटर भाबे रे इंटरनलाइज करथुबे बुझी पारथुबे हमकु बुझै परिबे जे व्यक्तिगत मूल्यबोध कोन एवं सामाजिक मूल्यबोध कोन. It is very interesting one. So, a प्रकार रो आपनकर सर्वे रिसर्च रे it is easy to assess values, beliefs, विश्वास पद्धति आमे ओडिया आपन मानकर बीए रो ओडिया बहिर लिखाई छी विश्वास पद्धति रो डेफिनेशन कोन संज्ञा कोन values व्यक्तिगत मूल्यबोध कोन सामाजिक मूल्यबोध कोन तबरी ए जिंस गुडा को गभीर भाबे अध्ययन करबा को इजी करे आपनकर ए सर्वे रिसर्च एवं से आ गुटे जिंस को ची एडवांटेज रे जे इट इज मैक्सिमल एक्यूरेसी एट इकोनॉमिकल रेट माने बहुत कम खर्च रे कम रिसोर्स मोबिलाइज करिकी कम रिसोर्स को यूटिलाइज करिकी आमे सेतिर मैक्सिमम एक्यूरेसी हम डाटा कलेक्शन में पाई परिबा गुडा सत्य रो अनुसंधान करा जाय परिबो मैक्सिमम सत्य रो अनुसंधान करा जाय परिबो विथ ए मिनिमम इकोनॉमिकल मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मुझे कहते हैं सब बेले इट इज एक्चुअली इन मेनी ऑफ दिस सोशियोलॉजिस्ट फाइंड इट इंटरेस्टिंग जे गोटे नेचुरल साइंस रे इंटरेस्टिंग कोन अछि वी आर डीलिंग विथ समथिंग which I am not attached with मु attached नो but when I am getting new things out of something that I am emotionally attached to एवं ता ऊपर मु गभीर भाव अध्ययन करछि कि नूतन तथ्य पाउछि मो समाज रो गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु ऊपर इट विल क्रिएट इंटरेस्ट इन एटीट्यूड स्टडी बिलीफ स्टडी वैल्यू सिस्टम द स्टडी आम सोसाइटी पर्टिकुलरली काहे कि एते साइंस एंड टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट हला परे मध्य इंडियन सोसाइटी इज मोर वैल्यू लेडन सोसाइटी को आ जाय आमे मूल्यबोध सहित बंचिवा को भल पाउ हमर सामाजिक मूल्यबोध बेसी जदियो मूल्यबोध वैल्यूज आर डिग्रेडिंग डे बाय डे हम देखु छी जे वैल्यूज इरोड करूची बोली हम कहू छी सामाजिक एवं नैतिक मूल्यबोध रो अधपतन घटुची बोली कहआ जाउची विघटन घटुची बोली कहआ जाउची सामाजिक मूल्यबोध रो नैतिक मूल्यबोध रो वर्तमान अधपतन घटुची बोली कहआ जाउची तथापि इंडियन सोसाइटी इज ए वैल्यू लेडन सोसाइटी तो एगुड़ा को इंटरेस्ट क्रिएट करिवो सो एटलीस्ट फ्रॉम methodological point of view this is the advantage of survey research. Disadvantages कौन यार सर्वे रो हमें मूलर प्रथम स्लाइड में कहछि इट इज नॉट एन इन डेप्थ स्टडी हमें कारण ओपिनियन नौचे टेस्ट नौचे चॉइस नौचे प्रेफरेंसेस नौचे लाइक्स एंड डिसलाइक्स नौचे तेणु करी इट्स नॉट ए वेरी इन डेप्थ स्टडी ऑन ए पर्टिकुलर इश्यू गोटे इश्यू को धरिकी हमें ता भीतर को पूरा penetrate करूने but we are trying to extract data on all these abstract terms. I would कहूँ जे practical problem होची जे it is time consuming. It takes a lot more time because our universe is big, our sample is big. Sampling error हमार संभावना बेसी अछि बोली कहा जाय संभावना इथि पई जे we access many data बहुत बेसी डाटा आसिले ताको आपण जेतल मैनेज करिवे हम आज ये रे पढिबा डाटा मैनेजमेंट भी केमति कोन करा जाय केते डिसिप्लिन वे करा जाय डाटा मैनेजमेंट रे मध्ये देयर इज प्रोन टू सैम्पलिंग एरर्स बोली कहै
ଏବଂ survey research demand କରୁଛି ଯେ expertise ଥିବ, knowledge on the part of researcher ଥିବ. It is not true at all, because survey research ରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର research demands expertise and knowledge on the part of researcher. Like our research design रे एथरे मध्ये आमे survey research design रे minimum आपनकर मौलिक आवश्यकता जहा minimum level of design रे minimum level of ये थिबो, कारण पर्पज ऑफ इंक्वायरी थिबो, कोन आमे करिया चाहूची, कोन चाहिया चाहूची, पॉपुलेशन हमरो को एरिया एवं कोटा हमर यूनिवर्स एवं रिसर्च अवेलेबिलिटी सब प्रकार रिसर्च जहा दरकार इतरे मध्ये मिनिमम आवश्यकता सेगुडा करछि. एवं सर्वे रिसर्च रे विभिन्न स्टेजेस विभिन्न फेजेस कथा जतबेले कहूची आमे एई गुडा को देखिबा को चेष्टा करूछु जे प्राय डिजाइन एंड प्लानिंग प्रोसेस गोटे थिबो तार, सेकंड फेज होची डाटा कलेक्शन, थर्ड होची डाटा जहा पाइले ताकू केमति प्रॉपर्ली आमे डाटा को एनालिसिस करबा एवं ताकू रिपोर्टिंग फॉर्मेट को नेकी फाइनलिटी ताकू दबा. तो लाइक द अदर काइंड ऑफ रिसर्च आपण एथिरे मध्ये से रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करबा, सर्वे रिसर्च डिजाइन करबा, सैंपल केते हेबे, टोटल पॉपुलेशन रो केते, ताकू हमें चेष्टा करबा कोन करबा पई डाटा गैदरिंग टेक्निक किबा हमर टूल्स एंड टेक्निक कोन यूज करबा ताकू मध्ये स्थिर करबा डिजाइन प्रोसेस रे. पायलट प्रोसेस मु जहा कहतली गोटे रिहर्सल भलिया आमे जहा करिचे ताकू क्वेश्चनर नेग्री फील्ड को गले सेठी आमे क्वेश्चनर को गोटे रिहर्सल मोड रे आमे पकेइबा एवं पचारि के देखिबा जे एक्चुअली मु एमति प्रश्न कले उत्तरटा केमति आछि किबा ए प्रश्न भूल, ए प्रश्न को आमे अन्य वे रे पचारिया जाई परिबो कि. मु आपन को कहि रखे जे आमे सेकंड फेज रे जो क्वालिटेटिव रिसर्च कथा पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पढिबा सेतरे मध्ये मु देखैबी जे क्वेश्चनर जो पायलट सर्वे रे आमे कोन पचारुची केते महत्वपूर्ण. हठात मु जहा पचारुची आंसर रे जहा आसुची किबा लोकटी जहा मते कहू नै मु आ गोटे प्रश्न पचारले सेम जिंस आउट की भलो रे पचारले से कहूची. सो आई विल गिव examples as to how I will reframe my questions. So pilot survey is an important phase. Unless and until you relate that example, you will not understand. Later on, we will study as to how one can reframe his question to extract beautiful data from the field. तापरे अपन डाटा कलेक्शन फेज रे आमे जेमति को जे कोठी लोकेटिंग द रेस्पोंडेंट कोठी अछंती, फील्ड सेटिंग कोन एवं सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग मेन सर्वे एगुडा जो सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द मेन सर्वे कथा कहउची, जेहेतु इट्स सर्वे कथा एटी सुपरविजन के करूची, मॉनिटरिंग के करूची, ए कथा बेसी उठुची. कारण नॉर्मल रिसर्च रे हमरो एगुडा को पड़े नै. एटलीस्ट योर गाइड और योर को गाइड विल help in this regard. Supervision कथा मॉनिटरिंग कथा नॉर्मली पड़े जो गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता विभिन्न सर्वे के अन्य संगठन मान द्वारा करा जाता सर्वे एवं ए सब परे हम डाटा एनालिसिस करबा, रिपोर्टिंग करबा. रिपोर्टिंग भितर एडिटिंग हबो, आज के कोडिंग, टैबुलेशन, एनालिसिस विभिन्न प्रकार जिंस जहा कंप्यूटराइज प्रोसेस रे मध्ये आली जाउची. अनेक क्वांटिफाइबल डाटा क्वांटिटी बेसिस रो डाटा को कंप्यूटर रे हमें मध्ये फीड करिक हम तार डाटा आइबारे समर्थ. बढ़िया सुंदर उठाएगा. mental of one today. So friends, we'll take a pause here. It was the slides that has been prepared for yesterday's deliberation. Deliberation, these are the slides prepared, and unfortunately I could not share that with you. Let's have a small discussion on this. Later on we will move to the today's presentation. Okay. Friends, am I audible to you? Parsuram Babu, Varsha Madam. Sir, you are audible, sir. Yeah. So can we take a pause and have some discussion? Yeah. Students, now put forth your question for the yesterday's session. If you have any doubt, any clarification, you go ahead for 5 minutes. Then sir will start for the next session. Any question, then ask.
Any question then ask students. Hello. Dear learners, please ask your question. What's your doubt? कौन doubt होची कौन अच्छी कौन पचारे सार को? Hello. हाँ हाँ. Sir, what is dynamic of population? Okay, good. First of all, before understanding what is dynamic of population, you need to understand what is dynamism. Dynamism कौन? Dynamism होची परिवर्तन. गोटे होची आपनकर सोशियोलॉजी रे आपण पढिबे स्टैटिक एंड डायनामिक. जोटा स्टैटिक जोटा स्थिर भाव रे अछि, डायनामिज्म होची जेतबे परिवर्तनशील गोटे जिंस परिवर्तन होची सब बेले. एवं सोसाइटी रो विभिन्न विषय वस्तु रे किबा सोसाइटी अराउंड अस including social relationship, social custom, tradition, everything. All these concepts that we have heard up till now, and society around us is always changing. Social change is a natural phenomena. आमे कहूँ सामाजिक परिवर्तन गोटे साधारण सामाजिक प्रक्रिया. तेणुक से जगह आपड़ जो कहते डायनामिक्स इन पॉपुलेशन किंबा डेमोग्राफी डायनामिक्स प्रत्येक मुहूर्त रे देखंतु आम पॉपुलेशन रो परिवर्तन होची. पॉपुलेशन रो कंपोजिशन रे पॉपुलेशन रो आपनकर मेल फीमेल रेशियो देखंतु आपनकर फीमेल माने फीमेल इन्फेंटिसाइड हो किंबा आपनकर छोटो जो वर्ष भीतर गोटे चाइल्ड जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हो. एमते देयर आर मेनी सेगमेंट्स मेनी डायमेंशंस ऑफ सोसाइटी population which keeps on changing. And the change in the demographic setup or demographic dynamism has its social implication always. आम ये डायनामिज्म कि डायनामिक सोसाइटी कथा कहूँ जे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड वेरियस डायमेंशंस ऑफ पॉपुलेशन रे चेंज हेले तार गोटे प्रतिफलन आम समाज उपरे समाज रो विधि व्यवस्था सामाजिक सोशल फैक्ट उपरे एवं सोशल रिलेशनशिप उपरे मध्ये रही. समाज रो प्रत्येक अंग उपरे कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रो परिवर्तन हेले तार परिवर्तन प्रतिफलन आम प्राय देखुचे. तार यदि आमे किसी एग्जांपल उपरे यदि आमे एनालिसिस करिवा मध्ये यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू सी दैट जे आमे सब बेले आमे स्लम ड्वेलर्स को मानकर कथा आलोचना को. स्लम ड्वेलर्स इन इंडिया और फॉर दैट मैटर इन एनी cities in India also creates interest among sociologists and anthropologists. जे आमे जेतो गोटे पॉपुलेशन रे गोटे निर्दिष्ट पॉपुलेशन रो आमे जेमति कहू जे पॉपुलेशन डेंसिटी इटसेल्फ आमे स्लम कथा कहू जे पॉपुलेशन डेंसिटी इन ए स्लम इज नेचुरली बेसी अन्य एरिया अपेक्षा एवं पॉपुलेशन डेंसिटी रे मध्ये सोशल इंप्लिकेशन रही. हाउ वी आर एक्सेसिंग द हेल्थ फैसिलिटीज, how they are accessing, how the government is able to provide the minimum basic facilities like education, health and all that. So all these things has a relation to the population dynamics, or population dynamics has a bearing upon the larger society we are living in. बुझ पाल ना ताको विभिन्न क्षेत्र रे आपण विजुअलाइज करि दे पारे. सर जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड थिला क्वेश्चन ता सेटा स्ट्रक्चर्ड सर्वे रो अंडर रे आछि कि दुईटा अलग अलग नहीं. जते बेले हमें स्ट्रक्चर्ड कथा कहू जे it is the prerogative of the researcher. First of all, we need to understand it is the prerogative of the researcher to what to include in his structure interview. कि normally देखा जाए जते बेले हमें स्ट्रक्चर्ड को जाउ छे सेठी लिमिटेड चॉइस दउ छे. एवं आर कथाटा आपण सबले यू कीप बियर इट इन माइंड दैट व्हेन टॉकिंग अबाउट ए निर्दिष्ट सर्वे कथा कहूचे इट इज नॉट ए इन डेप्थ स्टडी लाइक आवर एकेडमिक रिसर्च. हियर नॉर्मली दे डू नॉट गिव मच प्रेफरेंसेस बिफोर फॉर द रेस्पोंडेंट बिकॉज़ तकर गोटे सेट ऑफ माइंड नै कर जाय कि वी नीड टू स्टडी दिस
ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆପଣ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଚା ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି କଫି ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲି, then I have restricted your choice. Whether you like it or not, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ choice ଦିଟା। Open ended ହେଲେ in social science at least it is good or it is ideal to give open ended kind of questions to the respondent so that we can study, we can actually venture into the mental construct of particular social being. Gote lokar mental construct porjont ame pahanchi pariba, what he thinks otherwise, what is his perspective on a particular issue. Jodi tar perspective ko अध्ययन करिबा को जाउचे किंतु हम restrictive choice देइचे आंसर रे, possibly मु कहूनी जे सब जगह रे मु ठीक, किंतु possibly we may not venture or we may not study his mind completely. And for this, on this, there are many actually critics of sociologists. But किसी लोग कहते जे it will give us a precise answer of my question, and किसी sociologist कहती ना गोटे freedom जदि दिया जीवो ताले हमें बेसी venture करि परिबा human mind को. It depends. So गोटे definitely कहा जाय परिबनी कोटा भलो कोटा खराब. Thank you, sir. Sorry friends, मु जतबळे कहूची जतबळे बेले बेले because of non availability of words ओडिया कहला बेले को किमा ओडिया वर्ड खोजिला बेले को बेले बेले असुविधा होची मु कहि परउनी. So kindly bear with me. Shall we move to today's slides, or do you have any more questions? Anybody who is having some questions? Any query? आपण मान कहार किछ पचारिवार अछि कि ना हमें नेक्स्ट स्लाइड को जिबा? सर आउ कर किछ नाही बोले नेक्स्ट स्लाइड को जानु सर. ओके. मोहन सर. हां सर. कंटिन्यू योर क्लास. हां सर. सर मोर स्लाइड टा नुवा स्लाइड देखा गला कि? हां सर. Okay. So friends, today we are dealing with qualitative research, and qualitative research गोटे बड़ दिग होची field research. आज जो किछि विषय आम आलोचना कले सेठी किछि जिंस रहिला जहा को आम रिलेट करबा आजिकार ए स्लाइड गुडा करे आलोचना कला भितरे. Among you all know that the importance of field research or field work जोटा हमें कहूचे. So we'll study what is field work. अल्पे बहुत आपण माने समस्त जानि छिबे जे field work कोन, एवं there is a small हमें कहबा difference. हमें जो माने field रे काम करूचंती समस्त को जदी field worker कहबा किबा field research रे नबा ठीक होबो नहीं. So in the research jargon हमें field research को टिके अन्य हिसाब रे व्यवहार करू. तो social science रे हमें field research किबा field work को हमें आलोचना आज करबा. एवं नॉर्मल गोटे हमें जदी देखिबा field research कोन किबा field work कोन, जे नॉर्मली हमें कहूचु जे by field work we mean to interact people in their natural habitat, observing them and collecting socially relevant facts about their lives over a lengthy period of time.
नॉर्मली विभिन्न लोक फील्ड वर्क को लेकर फील्ड रिसर्च को लेकर विभिन्न संज्ञा देइछन्ती डेफिनेशन देइछन्ती ता मध्यरु गोटे जनरली appreciated and well taken definition को जदि आमे देखिबा जे गोटे नॉर्मल जिंस जे फील्ड वर्क इज नथिंग बट आपण लोक मानक संगे कथा वार्ता होचन्ती कोठी ना तांको नेचुरल हैबिटेट रे तांको आपण ऑब्जर्व करूचन्ती एवं सोशली रेलिवेंट फैक्ट्स ऊपर तांकर मतामत आमे ग्रहण करूची गोटे निर्दिष्ट समय व्यवधान को नै एवं ए जो फील्ड रिस्क वर्क कथा हमें जतबेले कहूचे फील्ड वर्क को नै करी हम जदि सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पर्टिकुलरली एंथ्रोपोलॉजी रे आपण फील्ड वर्क रो मीनिंग को नै करी केमिति फील्ड वर्क ता को सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फील्ड वर्क द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फील्ड वर्क इन एंथ्रोपोलॉजी पर्टिकुलर ताको नै करी मालिनोव्स्की बोली जने एंथ्रोपोलॉजिस्ट सी बहुत बेसी भाव रे कंट्रीब्यूट करिसंती कहा जाए जे ही इज द he laid the foundation stone of a जो field research रे observation मेथड को नेकरी कि ऑब्जर्वेशन को नेकरी फील्ड वर्क रे यूज करबा ए प्रकार जिंस को नेकरी मालिनोव्स्की एंथ्रोपोलॉजिस्ट जने कि ताको कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट मध्ये कहा जाए तो सी तांकर कंट्रीब्यूशन तांकर अवदान बहुत बेसी आपण माने देखंतु जे आमे जतबेले ऑब्जर्वेशन कथा कहूचे अपन डेफिनेशन में देखंतु मु दैछि बाय फील्ड वर्क इज मीन इंटरैक्टिंग विथ पीपल इन देयर नेचुरल हैबिटेट ऑब्जर्विंग देम एंड कलेक्टिंग ऑब्जर्विंग देम सो गोटे बहुत बड़ जिंस फील्ड रिसर्च रे ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन मेथड तो हमें समझते हमें सोशल रिम रे सोशल लाइफ रे डेली लाइफ रे वी डू ऑब्जर्व मेनी थिंग्स. So what is the difference between the kind of observation we usually make in our daily life and during field research? So that you need to differentiate between. So what you are observing? What is the difference between seeing and observing? अपन माने सेही प्रकार रो डिफरेंशिएट जदि करि परिबे ताले मु भाबुची आंसर लिखला बेलू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिखला बेलू मध्ये माने मेथोडोलॉजिकली इट विल हेल्प यू टू एनरिच and understand the larger society during real research through observation and giving answer in the answer script also. So what is the difference between seeing and observing? You all will agree with me that observing is something more than mere seeing. बाकी कथा अलग हमें आलोचना करिया बट गोटे जिंस रे आपण माने एग्री करिवे मो संगे मोस्टली डिसएग्री न करि पारंती जे आमे ऑब्जर्वेशन जतबेले कहू इट इज मोर देन व्यूइंग सीइंग देखिबा अपेक्षा ऑब्जर्वेशन ता आउटिके अधिका किछि. सो दैट ऑब्जर्वेशन दैट कीन ऑब्जर्वेशन दैट इंटेलिजेंट ऑब्जर्वेशन दैट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम वाज ए सोशियोलॉजिस्ट मानकर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानकर देयर इज ए थर्ड आई कि जोटा गोटे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व करि पारे नै. सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड एनफ to observe social facts and social realities around them in a much systematic manner. हम मानकर ए जो 2 वर्ष 3 वर्ष रो अध्ययन भितरे सोशियोलॉजी पढिबा भितरे कहा जाय जे दे डेवलप ए थर्ड आई से मानकर गोटे तृतीय नयन बोल के हम कहा जाय जे तृतीय नयन कोन ना they have got their own bent of mind. They use their bent of mind to understand and clarify and to penetrate deep into the understanding of a particular social reality or social phenomena. सेटा हमर ए सोशियोलॉजी को पढिबा भितरे सोशियोलॉजी को अध्ययन करिबा भितरे क्रिएट हेता बोली कहा जाय बिकॉज ऑफ आवर ट्रेनिंग ऑन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. आपण मान को एठी गोटे जस्ट मोर मने पडची गोटे एग्जांपल दोची. इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ ऑब्जर्वेशन. it will create interest in you the subject of sociology how it is interesting. मानकर मेथोडोलॉजी टा आपन को इंटरेस्टिंग न होई पारे सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मोर मने पडची हम माने एमए रे आई एम टॉकिंग अबाउट year 1991 1991 I took admission in MA in 1990 and in the very first class there was a professor
who used to teach us research methodology. आपण माने जानि थांतु से बोधवे एबे भी बंचिचंती सत्यनारायण रथ बोली तांको कहा एसएन रथ इज ए रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चरल सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ओडिसा रे गोटे बड़ एंथ्रोपोलॉजिस्ट से हम सोशल मेथोडोलॉजी पढौतले मेथोडोलॉजी रे गोटे एग्जांपल दउतले हम जेहेतु नुआ स्टूडेंट फर्स्ट क्लास करिया जाउछु मेथोडोलॉजी न पढै करी से हमको गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु ऊपर मतामत पचारले आपण इट विल क्रिएट इंटरेस्ट इन यू जे हाउ सोशियोलॉजी इज ए वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से कहले जे सपोज मु आपण मान को आज कहूची जे आपण मान को भीतर किछि लोक किछि पिला हाथ टेक जो माने हाथ रे सिगारेट धरी गोड़े जोता पिंधि निज निज घरे थिबा ठाकुर घर को घरे केही न देखिला बेले पसी परिबे कि मु कथा बुझिल ना ताको प्रश्न थिला जे आपण माने एटी कहंतु आपण सोशियोलॉजी रो फर्स्ट क्लास करिया आछथि मु आपण को कहूची जे आपण माने जोता पिंधि सिगारेट हाथ रे धरी निज घरे थिबा ठाकुर घर को पसी परिबे कि जेतेबेले बापा मां केही देखु नांती व्हाट वुड बी योर आंसर कौन होगा आपनकर आंसर इज इट नॉट जनरेटिंग इंटरेस्ट इन यू जे प्रकार प्रश्न कौन उचित होईची ए प्रश्न उत्तर कौन हे पारे आपण मान को मन को कौन आसुची मु कहबा कथा जे सोशियोलॉजी इज मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तेन कर मु ऑब्जर्वेशन कथा काहे की कहूची एठी एग्जांपल काहे की देली जे मियर ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स सोशल रियलिटीज अराउंड अस सोशल सिस्टम एवं सोशल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन कला बेले you will see that you will get much insights into our the various structural elements of our society आपण हमर अर्थनीति को पढंतु आपण सोसाइटी को पढंतु आपण कास्ट सिस्टम को पढंतु फैमिली सिस्टम को पढंतु ऑब्जर्व करंतु you will find many insightful things many beautiful stories you can create stories out of our social systems can you imagine जे हम कास्ट सिस्टम भीतर डिसिप्लिन कास्ट सिस्टम रो ओरिजिन केमते हेछि कुआ जाउछि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर और रिलीजन धर्म आउ हमर कृषि you'll be astonished to see that in spite of all the developments all the progress being made in technology आज भी आमे निर्दिष्ट गोटे दिन रे गोटे चासी जाइकरी प्रथम जेतोले लंगळ मुन प्रथम हळ बुलौची सेठी पूजा होउची नडिया ये होउची गोटे निर्दिष्ट तिथि बार तार रहिची so there are very beautiful things whether you discard it through your scientific brain of mind questioning everything that is happening around us being blind belief and all that but see how all these years how ages together things are being continued without जदि आपण कोइ without केति basis किछि नाही तथापि सोसाइटी रे गुडाई जिंस कंटिन्यू करूची and we are following things so मु सेति पय कहबा चाहतली जे mere observation mere seeing is not observation is something more than that तेंकरी हमें सही कथा कहछे जे मालिनोव्स्की सी होचन प्रथम लोक जे ऑब्जर्वेशन मेथड टाको बहुत गुरुत्व आरोप करथले और ऑब्जर्वेशन टाको एंथ्रोपोलॉजिकल फील्ड वर्क रे सोशियोलॉजिकल फील्ड वर्क रे केमती उपयोगिता रे अणा जाय परबो ताको से नेक गुरुत्व आरोप करथले एवं ये जो फील्ड रिसर्च कथा कहा होची हम सोशल साइंस रे हमें वर्तमान फील्ड रिसर्च गोटे कोन कहा जीवो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिसर्च विदाउट फील्ड देयर इज नो रिसर्च एट ऑल किसी जगह आपण माने अवश्य परवर्ती समय रे आपण सुनिबे आई विल क्लैरिफाई इट दैट देयर आर रिसर्च कॉल्ड पॉलिसी रिसर्च तेगुर आपण माने कहबे आ पॉलिसी रिसर्च रे फील्ड रिसर्च रो आवश्यकता नाही मिनिमम आवश्यकता अछि जे कोन सी रिसर्च नाही जोटी फील्ड रिसर्च नाही पॉलिसी रिसर्च कौन करा जाए गोटे निर्दिष्ट गवर्नमेंट रो पॉलिसी ऊपर गोटे क्रिटिकल रिव्यू करा जाए सेटा पॉलिसी रिसर्च कहा जाए पॉलिसी रिसर्च रे कम फील्ड रिसर्च थाए बट देयर इज नो सच रिसर्च कॉल्ड
research without a field presence or field experience न थाई गोटे रिसर्च हे पारिबो तेणु field research किंतु जेतेबेले हमर सोशियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिकल रीम को आसिला ता पूर्वरु ए field research केमिति होतला के करतला कोन यार ओरिजिन कोन आमे टेक्स्ट बुक कहूची हिस्ट्री कहूची जे किछि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर एवं जो माने ट्रैवलॉग जो माने लिखुतले ट्रैवलर्स हिस्ट्री आमे बोधवे हिस्ट्री रे बहुत जन को देखिचे मोर जहा मने पड़िछि आमे हुएनसांग को पीरियड रे जन दि जन को आमे देखितले जो माने ट्रैवलर्स जो माने दे यूज्ड टू नरेट द हिस्ट्री ट्रैवल करी करी विभिन्न कोन कह जो विभिन्न कम्युनिटीज रो एवं विभिन्न सिविलाइजेशन रो हिस्ट्री लिखियो चेष्टा करथि तो सेते बेले फील्ड रिसर्च रो ओरिजिन आ इवोल्यूशन को जो देखिबा सेठो आरंभ होला एवं मिशनरीज माने मध्ये जो माने बुली बुली धर्म प्रचार करथिले से माने मध्ये जाई करी किछि तथ्य बोध संग्रह करथिले बट मिशनरीज मानकर धर्म गुरु मानकर जो फील्ड रु कलेक्शन करथुवा तथ्य बाबत रे मोर व्यक्तिगत धारणा नै मु विशेष पढि नै बट आई कैन से दैट कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर माने करथिले कारण विभिन्न इवन भारत रे मध्ये हमर भारतीय व्यवस्था को हमर कास्ट सिस्टम को जॉइंट फैमिली को कि अन्य हमर कस्टम को ट्रेडिशन को से माने गभीर भाव रे अध्ययन करिया को चेष्टा करछंती ताकर प्रेजेंस भीतर एवं ट्रैवलर्स मानकर हमें इंडिया रे एवं इंडिया बाहर मध्ये हम देखिचे बहुत लोक इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स थिले जो माने बुली बुली भारत एवं पृथ्वी रो इतिहास देखिया पे चेष्टा करछंती सो मे बी एवं सेठी से कोआ होची जे मेजरिंग स्कॉल डिस्क्राइबिंग फिजिकल ट्रेट्स एगुडा को मोस्टली आपनकर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी हमें जे एंथ्रोपोलॉजिस्ट फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपण माने जानंतु जे एंथ्रोपोलॉजी इज डिवाइडेड into two parts mostly physical anthropology and cultural anthropology and cultural anthropology is more akin or more similar to sociology you must know that but they used to study past societies culture through विभिन्न प्रकार कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने पुराना सोसाइटी पुराना सिविलाइजेशन नो कल्चर को पढ़िबा पे चेष्टा करंती थ्रू फिजिकल ट्रेड्स सेतबेलर किछि आर्टिफैक्ट्स किछि खेलना हो सेतबेलर किछि माटी जिंस हो केतबेलर पत्थर हो खोदे हो से माध्यम रे कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने पूर्वर कल्चर को पढ़िबा पे चेष्टा करंती पुणी आनिबा पे सामना चेष्टा करंती एवं ए जो स्कॉल फॉल मुंडो जो यार आकार प्रकार को देखि करी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने सेतेबेलर हिस्ट्री कोन थिला सेतेबेलर मनुष्य केमति थिला ताकू ट्रेस करिया पे चेष्टा करिथांती एवं फील्ड वर्क रो फील्ड रिसर्च रो गुरुत्व एबे काहे की बढ़ी जाई छी ना हमें देखु जे इवन हमें ट्राइबल कल्चर कथा जदि कहूचे ट्राइबल कल्चर आम सोसाइटी रे आस्ते आस्ते फास्ट डिसअपियरिंग कारण हमें देखुचे इवन हमें साइंटिफिकली हमें जेतोले भारत रे आदिवासी संप्रदाय पॉपुलेशन कथा कहूचे स्टडी कहूची किछि आदिवासी संप्रदाय आस्ते आस्ते जेमती डायनासोर भलिया से माने एक्सटिंक्ट हे जाउछंती से माने विलुप्त हे जाउछंती बोली कहै होची because of various regions आमे से regions को जीवा नै काहे कि निर्दिष्ट आदिवासी संप्रदाय वर्तमान आ देखा जाउ नाहंती because तांकर जो अटैचमेंट टुवर्ड्स फॉरेस्ट तांकर जो हैबिटेट एगुडा को नै कि विभिन्न डेवलपमेंट इंटरवेंशन रे से मानकर जो प्रकार रो लिविंग स्टैंडर्ड जहा थिला सेथिरे व्याघात घटी जे एवं आस्ते आस्ते से माने अकोमोडेट करि पार नांती नुवा सोसाइटी संगे एवं से माने निश्चिन्न होय गेलनी से माने विलुप्त हबार बसिलेनी एवं गवर्नमेंट मध्ये अनेक जगह रे वर्तमान स्टेप नौची जे तांको हैबिटेट को केमिति गोटे इंटरवेंशन फ्री हैबिटेट मध्ये करा जाय परिबो इवन हमें स्टडी एवं माने अंडरस्टैंडिंग देयर सोसाइटी माध्यम रे मध्ये अनेक समय रे विथ द सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट ट्राइबल सोसाइटी को बारंबार अध्ययन करबा को जाईगी पढिबा को जाईगी तांको फोटो उठै के बाहर दुनिया को दबा को नेगिरी बेले बेले हमें we have compromised with our kind of value system and integrity and we have also been responsible towards this kind of things ame se details ku jiba nahi kintu gote jinsa hochi je seguda ko disappear kari jauchନ୍ତି tankar culture custom practices tekori ama field work field research ro gote मूल उद्देश्य होची जे how scientifically गोटे साइंटिफिक मेथड पुट करी आमे केमती कलेक्शन करि परिबा जे से जो विलुप्त हो जाउतवा कल्चर कस्टम प्रैक्टिसेस म आपन गोटे छोटो एग्जांपल दोजी जे अपन देखंतु सेठी आमे वर्तमान अगेन ह्यूमन बीइंग आमे इंडिया रे भी मध्ये आमे देखि आमे कोड जाउछु मेडिकल साइंस हमर कोड जाउछु दी काइंड ऑफ
जर्नी ऑफ मेडिकल साइंस टुडे 20 वर्ष तले आमे बेसी बोधे मोर क्लोजर टुवर्ड्स एलोपैथी ट्रीटमेंट संगे आमे बहुत जोर जड़ित थिले लास्ट 20 इयर्स से कोन डेवलपमेंट हेची जे आमे देखुचे पतंजलि भलिया जिंस आमे आयुर्वेद रो प्रमोशन बेसी देखुचे आमे विभिन्न प्रकार रो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपण स्टार्टिंग फ्रॉम ये करला जामुन रो ये ठू एलोवेरा जूस पर्यंत समस्त आमे एगुडा आरंभ कले काई करछे एवं गुडा जिंस होची गुडा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से गुडा कर ज्ञान कोठु आछि इट इज फ्रॉम द ट्राइबल कल्चर इटसेल्फ द पीपल लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज have their close affinity towards their forest their ecosystem जो फ्लोरा एंड फौना थिला तांकु से माने बेटर बुझितिले एवं सेठु से माने गोटे गछ गोटे छोटे लता गुल्म ताकु देखि कहि परतले जे दिस कैन ट्रीट दिस काइंड ऑफ डिजीजेस सो वी कैन नॉट डिस्काउंट दैट दे न्यू नथिंग अबाउट गोटे आदिवासी संप्रदाय लोक हुए तो गोटे छोट कपड़ा खंडे पिंदुची बुलुची बट ता परिवेश को नै ज्ञान भारी एनरिच्ड ताको आमे केते बुझिबा को चेष्टा करछि केते समय दैछि से भिन्न कथा बट तांको पाखरे जो ज्ञान अछि से ज्ञान को आमे केमति टैप करि पाइबा तो अनेक समय रे सेगुडा को मध्ये टैप करिया पे फील्ड वर्क इज नेसेसरी देखो साइंटिफिक वे रे आमे फील्ड वर्क केते करि परिबा सो दैट जो गुडा निश्चिन्न हो जाउछि कि विलुप्त हो जाउछि ट्राइबल कल्चर ताको फास्ट डिसअपियरिंग हो जाउछि बोली कहू जे तांको भितरे थिबा संस्कृति तांकर कस्टम तांकर प्रैक्टिसेस कोन थिला हमें कहूँ पोडू कल्टिवेशन इट वाज बहुत आज भी डिबेट हुए ये वेदर पोडू कल्टिवेशन इज डेंजरस टू द इकोलॉजी माने हमरो इकोलॉजी प्रति से गोटे थ्रेट करूची ना इट इज गुड देयर काइंड ऑफ इरिगेशन ताको निजस्व काइंड ऑफ इरिगेशन अछि तो हमें से डिटेल को जिबा नहीं नाउ आमे आज किसी टर्मिनोलॉजी पढ़िबा जो गुडा को आपनकर क्वालिटेटिव रिसर्च को एनहांस करिवे तमा क्वालिटी रिसर्च को हेल्प करिवे एटा गोटे टर्म एथनोग्राफी ये गोटे एथनोग्राफिकल रिसर्च हुए व्हाट इज एथनोग्राफी हम बुझिबा दरकार एथनोग्राफी होची टू कलेक्ट और रिकलेक्ट और accumulate knowledge गोटे निर्दिष्ट सेटिंग भितरे गोटे प्रकार संप्रदाय गोटे बड़ संप्रदाय जीवनचर्या जीवन शैली हाउ दे लीड देयर लाइफ व्हाट इज देयर काइंड ऑफ सोशल मीनिंग व्हाट इज देयर सोशल वर्ल्ड व्यू तांकर सामाजिक चरित्र कौन सामाजिक जीवन कौन समाज को देखिबार दृष्टिभंगी तांकर कोन तांको नेचुरल सेटिंग रे गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय संपूर्ण अध्ययन को हम एथनोग्राफी को एवं एथनोग्राफिक स्टडी गोटे निर्दिष्ट विभाग रो स्टडी मु हम तळे मु जेमति कहली 1990 मसिया रे हम माने जेतेबेले सब एमए पढिबा को गलु सेतेबेले हमको एथनोग्राफिक स्टडी करिया को मासे मासे गोटे फील्ड सेटिंग को लेकि छाडी देवतला जण दि जण टीचर गाइड रहउतले संगे हमको दि चारटा गोटे पंचायत छाड़ी दिया गाँ सिलेक्शन करके आपण जाकरी गोटे एथनोग्राफिक स्टडी करी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कौन ना बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड बिहेवियर ऑफ ए ग्रुप एज ए होल से भितरे आपण गुडाई जिंस आसीबो सेतरे तांकर इकोनॉमी के आपण अध्ययन करि परिबे तांकर सोशल लाइफ को अध्ययन करि परिबे तांकर मैरिज सिस्टम को अध्ययन करि परिबे तांकर ओवरऑल कस्टम तांकर ट्रेडिशन तांकर बिलीफ सिस्टम तो गोटे एथनिक ग्रुप रो गोटे एथनिसिटी एथनिक रो मु ओडिया वर्तमान बाहर करि पारुनी गोटे निर्दिष्ट संप्रदाय गोटे निर्दिष्ट ज्योग्राफिकल एरिया रे गोटे निर्दिष्ट कौन कह रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स थिबा गोटे निर्दिष्ट कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन रो मोस्टली रूरल सेटिंग रे एवं ट्राइबल सेटिंग रे गोटे प्रकार रो हिस्ट्री बहन करथबा गोटे कम्युनिटी
एंटिटी को आम स्टडी करने चेष्टा करता जोठी से गोटे भल कथा कही जे ए प्रकार फील्ड सेटिंग नौ जोठी के माने से ग्रुपटा दे शेयर ए कॉमन कल्चर गोटे कॉमन ग्रुप गोटे कॉमन कम्युनिटी गोटे ट्राइबल ग्रुप गोटे ट्राइबल संप्रदाय जो माने गोटे कॉमन कल्चर को इनहेरिट करिथांती शेयर करंती सेही मानन को हम स्टडी करिवार प्रक्रिया होची एथनोग्राफिक स्टडी आमे गोटे इन टोटो स्टडी करू टोटालिटी रे गोटे कम्युनिटी को स्टडी करा जाय एवं एठी इंटरव्यू करा जाए कथाबार्ता करा जाए लोगों संग बसा जाए बट मोस्टली गोटे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मेथड टाको बेसी यूज करा जाए पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन माने कोन आमे काली कथा होतले आज मध्ये हम कहतली जे गोटे आमे गोटे ग्रुप संगरे बसिबा गार किछि लोकन को पाखरे आमे संध्या बेले जे बसिके आलोचना करी all of them are participating and during that participatory observation I am observing things माने कथा कहउचंती तांको कल्चर विषय रे कहउचंती एवं गोटे ऑब्जर्वेशन हम सेट दोची एवं दैट ऑब्जर्वेशन एवं हम माने जेतोले सब फील्ड को जाउतलु टीचर माने कारण 30 वर्ष तळ कथा जेतोले कहउची तळे आमे रिसर्च मेथोडोलॉजी रे से क्लियर न था पढ़ा जाते कि वी आर नॉट वेरी मच आम भीतर से एक्सपर्टीज न छाए आमको कह जाए जे तुम डायरी कलम धरिक कम जीव कम लोक सम्मुख लिखा चेष्टा कर यू विल मेक देम फील एज इफ यू आर पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी कारण जो तुम लिखिक किसी धरिक काले से संदेह करी तुम कौन गोटे लिखिक कुआड़े देदेव देखो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन गोटे बड़ मेथड जगह आम भलरे एथनोग्राफिक स्टडी करें एवं जदि किसी डॉक्यूमेंट्स अच्छी स्टडी किसी आम प्रायर टू दैट आम देखिपर किसी कल्चरल आर्टिफैक्ट्स देखिपर समाज रे व्यवहृत होता किसी जिनस पत्र किसी जिनस जहाँ शो कर कल्चर को रिप्रेजेंट करुँच स्टडी कर सोसाइटी बाबद रे कल्चर उपरे मतामत रखिपर कि गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत रे उपनीत हो पार एथनोग्राफिक स्टडी रो डिजाइन केमथि होबो हम जदि सेही प्रकार गोटे 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 कम्युनिटी रो एंटायर कल्चर एंटायर सोसाइटी को स्टडी करिया को जाउछे ताले सितरे गोटे प्लान ता कोन केमथि होबो ए जगह कौन हो प्रायर टू दैट बड़ जिनस हो एंटरिंग द फील्ड थ्रू हुम हाउ नेगोशिएटिंग रैपो एंड ट्रस्ट मुझे प्रथम कही जे बड़ जिनस ए प्रकार सोसाइटी मन करंतु आपण मालकानगिरी रहउतबा बंडा संप्रदाय लोकन संगे आलोचना करिवे आपण मान भीतर जदि कई अपॉर्चुनिटी पाइथिबे बंडा संप्रदाय मझे किछि वर्ष से भीतर को जीवा पाई मना करा जायतला एबे बुधुए सेठी छड़ा जाउची आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू दैट बट they were very ferocious at that time मु बोधे 20 years बैक जाइछि सेठी they were very ferocious भारी समस्त संदेह चक्कर देखंती तंगरी मझे किछि विदेशी लोक जे कि फोटो उठाइबा को नै करी ओडिसा रे सारा मीडिया रे हाइलाइट हेतला किछि दिन पई से भीतर को किछि ये जो गवेषणा करने लोक छाड़ा विरोध कराइला छड़ा जाऊ ना एबिकार स्थिति मुझे कहीपरि नहीं तो कथा यही प्रकार गोटे कम्युनिटी जी कि इन हार्मोनी विथ नेचर रोचंती से एपर्यंत मॉडर्न सिविलाइजेशन संगे निज को कोप अप कर पारि नाहंती व्हेन यू आर एंटरिंग देयर काइंड ऑफ फील्ड एवं देयर काइंड ऑफ सोसाइटी सेठी आपण हाउ वी आर एंटरिंग दैट फील्ड कहा संगे जाउचंती तांको संगे रैपो बिल्डिंग तांको संगे ट्रस्ट बिल्डिंग केमिति करा होची दैट इज इंपोर्टेंट को लोकों को संगे मिसुचंती आपण एवं से बड़ जिनस को कारण प्लान तो अनेक जगह में प्लान बहुत जो रिसर्च प्लान को ये कले
बहुत जगह कहा जाए जे आमे जेतोले जो लास्ट पॉइंट कहछि विथड्रॉल फ्रॉम द फील्ड आमे जेतोले फील्ड को छाडुची आमे को अप्रोच रे आसुची अनेक समय विथड्रॉल फ्रॉम द फील्ड इटसेल्फ इज ए क्वेश्चन मु गोटे गवेषणा करूची मु 2 वर्ष 3 वर्ष धरी गोटे फील्ड को जाउची एवं मु फील्ड रू जेतोले आसुची हाउ आई एम विथड्रॉइंग माय सेल्फ देखो एगुडा को गोटे एथनोग्राफिक स्टडी रे तुम पाखे कौन मेटेरियल अच्छी अपेक्षा तुम को प्रकार ट्रस्ट बिल्डिंग कर ସେଇଟା important बाकी इश्यूज मु केते टाइम देची मनी केते करिची सैम्पलिंग कोन आइची ता अपेक्षा how you are moving to the full field is more important because we have encountered this kind of issues. Sorry students, if my experience will enrich you, I will be happy. Just ए जगह मु आपण मन गोटे एग्जांपल दोची मोर एमए रो द्वितीय वर्ष आमे 2 वर्ष जाक मासे मासे फील्ड जाउतलु field teacher along with all the students used to visit a particular rural setting, rural tribal setting. आमे द्वितीय वर्ष 1991 मसिया आमे जाइछु सुंदरगढ़ रो कोइडा अंचल कोइडा अपन मान जानिथु आदिवासी अध्युषित अंचल सेइठु बोधे आपनकर ए जो कोइडा बडबिल सेई अंचल रे हम गोटे पंचायत रे काम करिया पे रहिलु मो एटा शेयर करूची देखंतु एटा केते इंटरेस्टिंग होबो आपन मानकू जे आमे सब स्टूडेंट गोटे गांव को जाओ सब स्टूडेंट जाई खाता खंड खंड धर की जाकी बुली की किए कोन कोडी गोटे फोटो देखला गोटे ढेंकी देखला गोटे नुआ टाइप रो किछ ऑब्जर्वेशन कला आमे सेतबेल को आमो भीतर मध्ये इंटरेस्ट थाए जे आमे सोशियोलॉजी पढुछु आमे फील्ड को आसी फील्ड रो ऑब्जर्वेशन दबु जे जहां अधिका पाइला तथ्य नै कि संध्या बेल को सागर संगे डिस्कशन होबो ये गोटे फेस कारण सेतबेल मेथोडोलॉजी ऊपर किछ विशेष किछ ज्ञान न थाए किंतु आमे फील्ड जाइछु फील्ड रो गोटे मु शेयर करूची आपन मान को आश्चर्य लागो ठीक सही समय रे आपन मान को जदि सेतबेले 1991 माने बहुत पुराना पीरियड आपन माने हिस्ट्री रे पढिथिबे सुनिथिबे जे इंडिया रे सही पीरियड रे गोटे पॉपुलेशन कंट्रोल मेकानिज्म बहुत जोरे चलता है हम दो हमारा दो 2 चाइल्ड नॉर्म ए इशू गुडा बहुत जोरे चलता है एवं सेतबेले कोन करा जाता है जे सब पीएससी जो पब्लिक हेल्थ सेंटर रे सेठी सब मॉडरेटर कोन तांको ना गोटे दिया है यूज करा है तांको 200 ना 300 टंका दिया जाए देव तांकर उद्देश्य गवर्नमेंट रो होची जे लोकन को जाई करी कोन गोटे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बाबत रे बुझेबे बिगर फैमिली रो फॉलआउट ऑफ विषय रे बुझेबे जे छोट परिवार सुखी परिवार बाबत रे बुझेबे लोकन को कन्विंस करी कि केमिति आपनकर टिबेक्टोमी ऑपरेशन करा जिवो महिला मानकर गर्भ निरोध ए जो कोन ये ऑपरेशन करा जिवो आमे एटा होची माने पॉलिसी किंतु आमे गाँ रे आमे कोन देखिलु आमे आश्चर्य होलु गोटे देखिरि गोटे निर्दिष्ट घर भितरे जेमति खंजा हमर गाँ खंजा गुडी कथा मझी रे दुआरटा अछि एवं दुआरे ए जो अमरी बाड़ी पोता है कि छंदा है कि गोटे जेमति कोन कहा जिवो गोटे आपनकर केज भलिया गोटे केज सदृश माने छंदा छंदी है कि गोटे गोल बुले कि गोटे केज कर दिया हिची गोटे बाड़ा दिया हला बलिया दुआर मझी रे से भीतर गोटे महिला रहउछन कबाटी अछि से भीतर महिला रहउछि से महिलाटी पाखरे कपड़ा किछि गोटे खाइबा पे ताटिया फटिया रस जो कोन एल्युमिनियम ताटिया गोटे थुआ हिची से भीतर अछि नेचुरली आमे माने जो माने यंग स्टूडेंट्स ए प्रकार गोटे घर भीतर गोटे अमरी बाडरे पुता हितवा गोटे स्वतंत्र भाव घर तयारी हिची द्वार भीतर जणे सिटी जेमति हमरो सुआ सारी रहिला बळे ता भीतर जणे लाइफ लीड करूची इट एरोज इंटरेस्ट इन अस हम समस्त एक बेल के गलु से देखिलु कि जाई कि सेठी फोटो उठेले ए सब जिंस हैला ए सब रो कारण खोजिलु हम जे कोन पई से भीतर अछंती आपण आश्चर्य हेबे जे बेसी दूर नुह जदि कोइडा बडबिल केउंझर रो बहुत भीतर अंचल भी नुह से आपण खंडाधार जीवा रास्ता रे से गांटी पड़ियो रोड साइड रे से प्रकार गोटे अंचल रे 1991 मसिया रे गवर्नमेंट रो जो 2 चाइल्ड नॉर्म एवं पॉपुलेशन कंट्रोल मेकानिज्म रो को प्रकार रो दुष्परिणाम को प्रकार रो तार सेठी लोकंकर बुझिबा को नै करी तयारी हेची किबा लोकंक पाखरे कोन मेसेज पहुंची जे एवं तांको कल्चर तांको केनते एक्सेप्ट करनी जे से लेडीटी कोन हेची से लेडी रो हस्बैंड को कहि जणे बोध हुए 200-300 टंका दे करी मोटिवेट करिछि एवं से अनफॉर्चूनेटली ता वाइफ को नै करी पीएससी रे टिबेक्टोमी ऑपरेशन करे दै छथि एंड व्हेन
सी ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन करके फेरी गाँव रे तांको सोसाइटी तांको कल्चर ताको एक्सेप्ट करि नहीं एवं सी कहै सी जेहेतु एमती करके आछि ता हाथरू आ केही ता हाथरू केही पानी ग्रहण करिवे नहीं ता माने सी घरे रोसे करि परिबोनी का खाइबो कहीं केही पानी छुइबेनी ताटू तेणु करी ताको मारी दिया होनी ताको किछि करा जाउनी सी बंचिबो किंतु सी किछि जिंस छुइबो नहीं का रोसे करि दबो नहीं त पानी छुइबे नहीं ताटू केही तो सी बंचिबो तो सेही प्रकार गोटे लाइफ रे बंचिबो मु जानि नाही कि आमे सेते बेले जानिबा पई चेष्टा करिना मु जानिबा पई चेष्टा करि नाही कि यह आम पाखे गोटे घोर बड़ कह नैतिक मूल्यबोध गोटे गोटे बहुत भूल मो द्वारा आम द्वारा जे आम से गुड़िक रेकर्ड कलु लिखिलु आसिक खातार लिखिकी मार्क पाइक एमए पास कर चली आसलु आम कभी चिंता कलु ना जदि किसी दिन आउ किसी वर्ष से महिला बंची बोध हुए से प्रकार अवस्था बंची अवस्था किसी परिवर्तन आसी तो मोर कहवा कथा स्टडी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी एथनोग्राफिक स्टडी आम जो करूँ मत लगे जे आमे वी हैव कमिटेड ए ब्लंडर वी हैव कमिटेड ए क्राइम आमे सेटा देखिकी आसला परे सेठी लोकों को किछि बुझेइथिलु कि काई मोर मने पडु नै आमे फोटो उठेलु संग साथी हेकी एवं खातार लेखि राछू आमर भी जो माने टीचर थिले पॉसिबली मोर जहा मने पडुची विदाउट एनी एक्चुअली तांको ऑफेंड नकला भलिया किंतु से माने मध्ये मध्ये बेसी किछि गुरुत्व आरोप करनथले ताको लोकों को बुझेबा जे या द्वारा पानी छुइबा संस्कृति को किछि खराब इफेक्ट पडुची ताको आमे बुझे करिनु आमे चाली आसलु से जगह मोर कहवा कथा तो मु कोन नै कि जाईची केते कैमरा नैची केते अवेलेबल रिसर्च टूल्स टेक्निक नैची मनी टाइम अछि से भिन्न कथा बट मु जो मूल ये रे मु जो कहली आ गुटे स्लाइड रे से स्लाइड टा कोडे गला जे कथा होची मु माने मु केते संस्कृति संपन्न कि मु केते बुझीची माने मोर कहवा कथा सॉरी फ्रेंड्स टिक के खाली मोर कहवा कथा मु तको कल्चर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस जे तबले रिकॉर्ड करूची एवं मु ए प्रकार रो किछि जिंस देखुची मोर किछि करिवार अछि लेकिन मु आपन के एग्जांपल दवा उद्देश्य होची जे एथनोग्राफिक स्टडी रे आमे सब जिंस रिकॉर्ड करिवा डिजाइन तापर आ गोटे जिंस आपन देखन गोटे टर्म आपन रिसर्च भितर पाइबे की इन्फॉर्मेंट आमे क्वालिटेटिव रिसर्च कथा जळ कहू जे गोटे की इन्फॉर्मेंट की आपनकर स्टडी रे आपनकर रिसर्च रे आपनकर जो निर्दिष्ट एथनोग्राफिक रिसर्च करूचंती से जगह रे जो प्रकार रो इन्फॉर्मेंट आपनकर प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेंट ताको आमे की इन्फॉर्मेंट कहू एठी इन्फॉर्मेंट माने बुझंतु नाही जे इंटेलिजेंस रिपोर्ट किमा से लुचिकिरी किछि गोटे तथ्य मते दोछि ना मोर कहया कथा को माने मो पई गोटे प्राइमरी इन्फॉर्मेंट जो मानकर प्राइमरी इन्फॉर्मेंट तार गान लोक माने मु एथनोग्राफिक स्टडी करूची एवं मु सेही कम्युनिटी ऊपर 20 वर्ष तळे लेखा हेतवा गोटे बही पढिची बही गोटे रेफरेंस पॉइंट मो पाई पारे बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई कैन नॉट फॉर्मुलेट दिस सोसाइटीज टुडेज स्टैंडिंग वर्तमान रो स्टैंडिंग रे मु ताकू करि परिबि नै सेटा को नै परिबि नै सेति पई मोर कथा की इन्फॉर्मेंट मो पई से रेफरेंस बही नु की इन्फॉर्मेंट होची से लोक मान सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी रे सब बेले यू विल फाइंड इट important to see or to decide upon yourself निजे डिसाइड करिवे जे एई प्रकार रो स्टडी रे और की इन्फॉर्मेंट को मन मो पाखरे जते डॉक्यूमेंट्स थाउ जते प्राइमरी डाटा थाउ बट आई मस्ट नीड टू वेंचर इनटू द फील्ड एंड से फील्ड भितर की इन्फॉर्मेंट की मु डिसाइड करिवे आमे ऑब्जर्वेशन कथा से तबले कहतले मु कहतले ऑब्जर्वेशन जतबले आमे आलोचना करबा डिटेल्स आमे आलोचना करबा
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कौन एवं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रो माने हिस्ट्री कौन केमिति कोठु आरंभ होईछि participant observation which is to gain a close and intimate familiarity with a given group of individuals आमे जे कोनोसी गोटे गिवन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऊपर आमे आलोचना करूछि किबा ताकू नै करी गवेषणा करूछि से रिलीजियस ग्रुप ऑक्युपेशनल ग्रुप कल्चरल सब ग्रुप गोटे हेता तो गोटे इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट विथ द पीपल एंड देयर कल्चरल एनवायरनमेंट गोटे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम गोटे लंबा पीरियड ऑफ समय देई आमे गोटे निर्दिष्ट पॉपुलेशन रो निर्दिष्ट ग्रुप संगे आमे क्लोज एंड इंटीमेट फैमिलियरिटी हे आमे तांको सोसाइटी को ऑब्जर्व करूछ एवं एई प्रकार रो ऑब्जर्वेशन रे प्रायतः गोटे लोकल कम्युनिटी मान संगे इन्फॉर्मेंट मान संगे गोटे बहुत पर्सनल लेवल रे रिलेशनशिप बिल्ड करा जाए हम स्टडी जदियो हम वी आर देयर टू अंडरटेक ए स्टडी बट तांको कल्चर को अध्ययन करिया पे अनुध्यान करिया पे बेले बेले देखा जाए जे पर्सनल रिलेशनशिप बहुत जोर रे बिल्ड करिया को पड़े किबा बिल्ड हेई जाए रापोर्ट एमती हुए ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेंट्स मान संगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गोटे भलो रिलेशनशिप बिल्ड हेता तेणु करी आमे जेतले कहूची गोटे जने पीएचडी करछि 3-4 वर्ष पई 3 वर्ष पई फील्ड जाउछि तेकरी सी मियरली पचारि के पूछु नै लास्ट पॉइंट देखो बाय लिविंग विथ द कल्चर स्टडीड रिसर्चर्स वर एबल टू फॉर्मुलेट फास्ट एंड अकाउंट्स ऑफ देयर लाइव्स सी दिने जाइनी 2 दिन जाइनी 2 वर्ष 2.5 वर्ष मजे 3 मास 4 मास लगा जाइग्री फील्ड वर्क करूछि दैट मींस सी गोटे सेकेंडरी मटेरियल हिसाब रे तांको लाइफ को बुझिनी तांको कल्चर को बुझिनी he is living with their culture जो कल्चर को से स्टडी करूची से लंगर पीरियड ऑफ टाइम तांको संगे बंची छी सो दैट आपण जते बळे यू विल नरेट द अकाउंट्स आपण गोटे निजर लाइफ एक्सपीरियंस दे परिबो ओनली थिंग इज दैट हाउ ऑब्जेक्टिव यू आर इन ऑब्जर्विंग थिंग्स ओनली जिंसो मु तांको संगे रही गली बोली जे मु बायस्ड भी से कथा नै I must be unbiased in my approach in dealing with their culture. Participant observation the strength कौन कथा होची आमे जेतले पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करूछु आमे गोटे आमे निजी को तांका संगे अलाइन करिया पे चेष्टा करूछु बहुत माने सेंसिटिव जिंसो सेंसिटिव सिचुएशन को आमे तांको संगे लंगर पीरियड ऑफ रही ऑब्जर्व करिवार अपॉर्चुनिटी पाइले आमे गोटे सिद्धांत रे पहुंची परिबे कारण दे विल नॉट शेयर इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इमीडिएटली टू एन आउटसाइडर यू नीड टू बी वेरी क्लोज टू देम to understand, observe and ta upare formulate your ideas. यार weaknesses कौन कथा होची जेतेबेले हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करूछु normally it takes a longer period of time एवं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भितरे गोटे मु जब कहली जे मो से कम्युनिटी संगे बहुत मिसी गलनी सेथिरे द रिस्क ऑफ ऑब्जर्वर रो कंक्लूजन ता बायस्ड एंड इनएक्यूरेट हमार चांसेस बंदे बहुत बेसी मु कहूनी सब बेले बट एन ऑब्जर्वर नीड्स टू बी वेरी केयरफुल इन रीचिंग टू द कंक्लूजन्स थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बिकॉज by moving to the field quite frequently, quite regularly, he becomes part and parcel of that society. And when narrating, when giving his final remarks, his remark might be affected through by biasness. ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସବୁ ଜିନିଓଲୋଜି ଫିଲ୍ଡ ରେ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରେ आमाने समस्त जानि छी व्हाट इज जीनियोलॉजी जीनियोलॉजी आमाने समस्त जानि छी जे ओडिया रे ताको कहै छै वंशावली
वंशावली रो कौन गुरुत्व रही समाज कि सामाजिक अध्ययन कि गवेषणा रे ये जो जीनियोलॉजी आज आज ए टूल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च कि वंशावली कि गोटे निर्दिष्ट फैमिली रो फैमिली ट्री को मूल को जीवा जेजे बापा किए थे किए थे यही ट्री टा को निर्धारण करने द्वारा समाज रे गुड़ाई जिनस बुझी हुए पारिवारिक स्तर रे एवं फैमिली सोसाइटी स्तर रे गुड़ाई जिनस बुझा जाई पारे एवं जीनियोलॉजी इज ए वेरी क्लासिकल काइंड ऑफ रिसर्च टूल टू बी यूज्ड बहुत पुराना बहुत क्लासिकल काइंड ऑफ गोटे रिसर्च टूल हिसाब से ग्रहण करा जाए एवं कहा जाए जे WH रिवर्स बल्कि जड़े इंग्लैंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जी कि यही प्रकार जीनियोलॉजी स्टडी को आरंभ करते प्रथम तापर सब्सिक्वेंटली सोशियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट एमाने मध्य ताकू ग्रहण करबा आरंभ कले एवं ए जो भद्रलोक जे विलियम हसल रिवर्स इंग्लैंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट से फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 18 भितर जो वर्ल्ड वार होइतला से वर्ल्ड रे जो माने सफर करथले से गोटे डिजीज रो ना थला सेल शॉक बोलबी सेल शॉक को मु मध्य देखिली जे गूगल रे सेल शॉक रो अर्थ कोन होई पारे जे मोस्टली आमे जो को जे ट्रॉमा गोटे एक्सीडेंट पर ट्रॉमा हे जिबा जेमति वार रे जो ऑफिसर्स माने सफर करूछन ट्रॉमेटिक जो अवस्था को देखिकरी जे माने ट्रॉमा हे तांको भीतर गोटे गोटे शॉक हे जाउची सेटा को सेल शॉक कहा जाय एवं ए भद्रलोक से सेल शॉक डिजीज ऑफिसर्स किंबा वार जो सैनिक मानकर ट्रीटमेंट करुले ये भद्रलोक या पर कौन कले ना गोटे टॉरेस स्ट्रेट एक्सपेडिशन बोलकरी गोटे एक्सपेडिशन करथिले जे से एक्सपेडिशन रो मूल जिंस होतला जे गोटे स्टडीइंग हेरिटेबिलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल कैपेसिटी जे साइकोलॉजिकल कैपेसिटी सपोज मो बापांकर मानसिक अवस्था एया थिला मु आज हिज सन मु किछि सेटा इम्बाइब करिछि कि मोर सेही प्रकार रो साइकोलॉजिकल कैपेबिलिटीज रु मु किछि कोन कह जिवो बायोलॉजिकली इनहेरिट करिछि कि तो दैट इज व्हाट टॉरेस स्ट्रेट एक्सपेडिशन जाकू प्रथम करी WH रिवर्स एही प्रकार गोटे स्टडी ग्रहण करथिले एवं ए स्टडी ग्रहण कला बेले सी मुख्यतः जीनियोलॉजी किंबा वंशावली को गुरुत्व देथिले तेणु करी WH रिवर्स एवं टॉरेस स्ट्रेट एक्सपेडिशन को बेसी भाव में आरंभ बोलकरी जीनियोलॉजी रो ग्रहण करा जाए सेकेंड से इंडिया रे मध्ये गोटे स्टडी करथिले 1906 रे से गोटे बही लिखिथिले दि टोडास टोडास होचंती हमर नीलगिरी बोधे सेटा नीलगिरी एक्जेक्टली नीलगिरी माउंटेन रेंज बोधे नीलगिरी माउंटेन रेंज साउथ एरिया रे सेटा अछि सेठिकार गोटे टोडास ऑफ नीलगिरी टोडा होचंती गोटे आदिवासी संप्रदाय सेमानकर लैंग्वेज एंड किनशिप टर्म तांकर भाषा एवं तांकर किनशिप माने बुझंतु रिलेशनशिप माने किनशिप माने रक्त संबंधी रक्त संपर्कीय मानकर अध्ययन एवं तांकर लैंग्वेज रो अध्ययन से करिछि एवं सेथरे मध्ये से आपनकर जीनियोलॉजी के गुरुत्व देकरी आरंभ करथिले एवं सेथरे बही गोटे लिखि जाय छि टोडास ऑफ 1906 मसले से बहीटी लिखि छि एवं आउ गोटे जिंस मु मध्ये सफिशिएंटली जानि नाही बट आई केम अक्रॉस थर्ड जिंस सेतरे से पढुतले जे से टोडास मान को भितरे गोटे ममिफिकेशन ऑफ डेड बोली कांसेप्ट थिला कोडे कि जो माने तांकर मरि जाउतले मोस्ट प्रोबेबली आमे जहा बुझुचे मु ताको डिटेल जाई नै आपण माने जाई कि गूगल देखिले आहुरी बेटर जानि परिबे जे से माने बोधे तांको डेड मान को माने पढु नथिले बोधे तांको ममिफिकेशन ममी हिसाब रे रखिया पे चेष्टा बोधे करूथले टोडास सेते बेले तेगुरी एई प्रकार जो ममिफिकेशन ऑफ डेड लैंग्वेज एंड किनशिप टर्म को स्टडी करिया पे इंडिया रे सी टोडास मान को ऊपर बोटे बही लिखितले एवं सेथिरे मध्ये देखा जायतला जे वे बैक इन 1900 मसिया रे 1906 बेले को से बही बाहर करले माने ता स्टडी ता पूर्व करछथि तो टोडास मान को ऊपर जो स्टडी से करछथि सेथिरे मध्ये से देखैछथि जे ही हैज टेकन ही हैज यूज्ड द टूल ऑफ जीनियोलॉजी किबा वंशावली को से विशेष भाव अध्ययन वंशावली माध्यम रे सब अध्ययन करिया को सक्षम है
बुझा जाए W.H. Rivers is the founding father of the tools of genealogy in social science research. सोशल साइंस रिसर्च रे एई प्रकार टूल को ग्रहण करबा सी होचन प्रथम एवं मूल व्यक्ति. जीनियोलॉजी कहले कोन जति कि वंशावली रो आपण माने प्राय बुझी पारुतबे जे इट प्रोवाइड्स ए वे टू कनेक्ट विथ द पास्ट व्हाइल बिल्डिंग ए फ्यूचर. जीनियोलॉजी माध्यम रे हमें कनेक्ट करिया को चेष्टा करू हमर पास्ट कोन थिला टू बिल्ड ए फ्यूचर. सेकंड होची इट गिव्स पीपल ए सेंस ऑफ वेयर दे कम फ्रॉम व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ प्राइड. मोर आरंभ कोन को प्रकार वंशरू आसी जदि मु ट्रेस करि पारछि आई फील प्राउड अबाउट माय पास्ट. तापरे ए जो संपर्क माने मो बापार केते जण भाई थिले तांकर किए कोठी अछंती ए प्रकार रो जो जीनियोलॉजिकल डाटा वैरायटी ऑफ पर्पसेस ये करे जेमति स्टडी ऑफ किनशिप. मोर किनशिप रिलेशनशिप कोठी कोठी अछि मोर रक्तगत संपर्क केते केते कोन विस्तार हे जाई छी. तापरे माइग्रेटरी हिस्ट्रीज ऑफ पीपल कैन बी स्टडीड. किए कोठु आसीतला मो जेजे बापा कोठु आस्तले तांकर ये को गां रे किए अछंती ए प्रकार गोटे हिस्ट्री को ट्रेस करा जाय. एवं आ गोटे कथा कहूँ जीनियोलॉजी आल्सो फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ रापो एस्टाब्लिशमेंट विथ पीपल. यदि गोटे लोक पाखु जाई कथबार्ता करुच्ची सी कहूँ मोर बापा बड़ भाई जाइए थिला मो घर मनकर कोरापुट रूम आसी कथबार्ता है माध्यम आम हठात चिन्हा पड़े अरे अरे मोर अमुकर जेजे बापा से मुझे जानी ना अमुक ता माध्यम गोटे रापो बिल्डिंग किंबा नॉर्मली गोटे रिलेशनशिप बहुत समय आप देखते बस ट्रेन में गला बेलू कथबार्ता हो हठात गोटे कॉमन रिलेटिव दी जन को चिन्ही. सो दैट गिव्स गोटे गोटे हठात क्लोजनेस बढ़ी जा ड्यूरिंग ए 2-3 आवर्स ट्रेन और बस जर्नी वी बिकम वेरी क्लोज. वी यूज टू ऑफर ईच अदर किसी डेलिकेसीज जदि आम नहीं दिया निया करूँ चाह पीऊँ हठात आम भीतर गोटे रापो बिल्डिंग हो जाए वी बिकम फ्रेंड्स. सो जीनियोलॉजी नॉर्मली हेल्प्स ऑल दिस थिंग्स. आ गोटे जिनस बर्तमान क्वालिटी रिसर्च किंबा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट रे रिसर्च रे खोजा जाउची. आम जहाँ फेमिनिज्म रे पूरा पढ़ुले सेक्स जेंडर जस्टिस फेमिनिस्ट अप्रोच जहाँ पढ़ुले बर्तमान कह इंटरव्यू जदि करा जाउची इंटरव्यू रे गोटे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अणा उचित. आम जेकोसी गोटे इंटरव्यू करुचे गोटे माने गोटे जेंडर किंबा फेमिनिस्ट दृष्टिभंगी मध्य ता भीतर थिबा आवश्यक. माने ता कहिबार अर्थ कोन बुझंतु फेमिनिस्ट इंटरव्यू माने दृष्टिभंगी या जे जेकोसी जिंस को आमे जेतबे आलोचना करूचे गोटे वुमेन रो पर्सपेक्टिव रो मध्य देखिबा दरकार. एथि पे कथा आज उठुची जे सब बेले सब आलोचना गुडी को आपण माने देखंतु अनेक समय आम अजाणत आम सब बड़े बेसी वी लीन टुवर्ड्स मेल माने आम तेणुक जो आम कथबार्ता करुचे आम गोटे घटना को गोटे महिलार दृष्टिभंगी देखा चेष्टा करवा इंटरप्रिट करवा जे महिलाटी केमिति एक्सपीरियंस करुची से घटना रे कहा जाउची जे आगुरु एटा कहीं एक कथा उठुची एटा आपण मान को अनरियलिस्टिक लागि पारे अनेक समय किंतु हिस्ट्री कहूची जे अनेक समय रे जेतोले लाइफ एक्सपीरियंस कथा उठुची रिसर्चर्स माने आगुरु नोइंगली और अननोइंगली वुमेन रो अकाउंट वुमेन रो व्यू पॉइंट वुमेन रो पर्सपेक्टिव को डिस्टॉर्ट करिवारे हेल्प करछन कारण द डोमिनेंट वर्ल्ड व्यू हैज ऑलवेज बीन मेल्स वर्ल्ड व्यू. पुरुषटी पृथ्वी को केमिति देखुची पुरुषटी रो वर्ल्ड व्यू कोन व्हाट इज हिज पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड व्यू हैज बीन रिकॉर्डेड थ्रू आउट हिस्ट्री. एटा कुहा जाउची या ऊपर डिबेट मध्ये होउची जे नो इट इज नॉट ट्रू बट थिंग इज दैट सिंस टाइम इमेमोरियल male have always been dominating and male has always dominated every field of social activity. तमे कला कहो तमे भास्कर्य कहो साहित्य कहो सब जगह मेल इज डोमिनेटिंग. तो थिंग इज दैट कहा जाउची जे बोथ वे से सब राइटिंग से सब स्क्रिप्चर्स रे से सब टेक्स्ट रे फीमेल रो अकाउंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन बोध नथिला. वर्तमान अंतत आमे चेष्टा करबा जे सब जिंस रे हाउ
A woman looks into the larger world. Women world view कौन ता दृष्टिभंगी रु समाज विभिन्न विषय वस्तु अध्ययन करबा पई चेष्टा करिया होता एवं इंटरव्यू रे मध्य से जिनसटा डेलिबरेटली हम मुंडरे रहिबा दरकार म आपन सेदिन कहउतली मने थिबो जेतले फेमिनिज्म पढौतली तापर आलोचना भितर को हम कि आसिलेनी म कहितली जे कोविड चली आदिवासी संप्रदाय लोक कोविड को लेकर हैरान होथिबे निश्चय ओडिसा अर्थनीति दुर्बल होबार लागिछि एवं से समय जंगल जात द्रव्य चाहिदा तार मार्केटिंग ताकू लेकर से माने बंचंती ताकू लेकर आमे गोटे जेतोले गवेषणा करछि किमा गोटे स्टडी करियो चेष्टा करछि हमर प्राइमरी इंटरव्यू करिवार लोक माने को माने आपण माने से दिन मु से प्रश्न करथिले आमे आलोचना करि पार नथिले मु आपण कहि रखे जिते आमे देखिछे आम गाँ गहली ठू आरंभ करी आदिवासी संप्रदाय एरिया रे जो माने आमे बस रे भी जाइछे आसे बस साइट रे देखिछे जदि मोहलटी गोटौछि केते को माने गोटांती सेते बडे मोहल गछ तळे गोटौथवा लोक किए आपण माने एग्री करिवे मो संगे मोस्टली जे आइदर छोटो छुआ नहले गोटे महिला बुढीटीए महिलाटीए छोटो छुआ बहुत कृष गोटौछि मोहल तेणुकरी कलेक्ट जो माने करूचंती फॉरेस्ट गैदरर जो माने मोस्टली दे आर वुमेन
Hello. Hello. ନା हेलो Mohanty सर sir. सर नांती सर लेफ्ट हे जाइछन्ती लेफ्ट ହେଇଗଲେ ସାର୍ ସାରଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଣ ହଉଛି ୟାର? ତମେ କର Call Pratap कौन? Oh, dear learners, you just wait. Huh? Sir is joining. Stop recording. Change layout. Full screen. Turn on captions. Settings. Use a phone for audio. Report a problem. Report a music. Help. Stop recording. Change layout. Full screen. Change. Stop. Help. Report a music. Escape. More options button. Menu. Your microphone is on. Stop recording menu. Change layout menu. Full screen menu. Turn on captions menu. Leaving menus. MSO-2 IGNOU. Mohanty. Pratap. Marina has left the meeting. No more different elements now. Turn on camera. Let it Parsharani the document. MSO-2. MSO-MS document. In Parsharani. Hide participant. Clickable. Parsharani. Red. To all 11 people in the call, including 5 more not shown here, but MSO-2 IGNOU document. In Parsharani the hide participant. Clickable. MSO-2 IGNOU Mohanty. MSO-2 document. Parsharani. Red. To all 11 people in the call, and show participant options, but chat with other participants. Details for MS. Turn off microphone leave call button. Turn off details for you. To chat with other participants. Show participant options button. Red. Parsharani document. MSO-2 IGNOU Mohanty. Sir. बोलो मैंने हाँ का कंटिन्यू करिवे ना क्लोज करिवे हाँ ठीक है देखिरा आपण पिला कहि दिन पचर जो ऑडियो